बच्चों, गुड मॉर्निंग। टू बिगिन विथ, शुरुआत में हम आपसे कहेंगे इलू इलू, एंड यू बताओ इलू का मतलब क्या है। आप बताएंगे इलू का मतलब सर सब कुछ जानते हैं, सब लोग जानते हैं। इलू का मतलब आई लव यू, बट यू आई लव यू टू, बिकॉज यू आर जस्ट लाइक माई किड्स एंड आई वॉन्ट यू द बेस्ट फॉर माई किड्स। डियर स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम माई साइड आई हैव डिस्कवर्ड है नया वर्ड डिस्कवर किया हूँ, एक नया लफ्ज़ आपके लिए ढूंढा हूँ, वो है ईटू ईटू। ईटू का मतलब आई टीच यू मैथमेटिक्स, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू डेसिमल्स। सो हम जानते हैं कि आप लोग बेसब्री से मेरे क्लास को वेट कर रहे हो, क्योंकि मैंने पता चला है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह वीडियो 1 वीडियो 2 को रिस्पांस दिया है। तो मैं आपसे वादा करूँगा कि मैं आपके लिए नित्य आपका पूरा चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा। मैंने ये भी सोच रखा है आपके लिए कि आप अब 7वीं कक्षा में हो, इसके बाद 8वीं जाओगे, उसके बाद 9th, उसके बाद 10th पीयूसी एंड इंजीनियरिंग और साइंटिस्ट या कुछ न कुछ बनोगे, हाई स्टडीज़ बनोगे। तो मैंने सोच रखा है कि मैं आपके लिए 7th स्टैंडर्ड से लेकर जब तक आप अपना डिग्री नहीं कंप्लीट करोगे तब तक मैं आपके साथ रहूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा नहीं रहूँगा, हमेशा आपके साथ रहूँगा। जब तक जान है जहाँ है मैं आपके साथ रहूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। सो इसके लिए क्या करना, आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या है, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आपको पहुँचना चाहिए। किस तरह पहुँचेगी, ये चांसेस है कि आप लोग मिस कर पाओगे या भूल जाओगे या आपको लिए नहीं आएगा, ढूंढते रह जाओगे। तो इसलिए एक तरकीब है, जो तरकीब मैं बताने वाला हूँ उसको गांठ बांध के रख लो, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है और आपके लिए कोई सा भी मेरा जो वीडियो मैं डालने वाला हूँ वो वीडियो मिस नहीं होगी। उसके लिए क्या करना है आपको, मेरे चैनल के अंदर सब्सक्रिप्शन बटन है उसको दबाइए, और बेल बटन है वो बेल बटन को भी दबाइए। इसका मतलब क्या होगा, मैं जो भी वीडियो यूट्यूब में डालूँगा वो हर वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। तो आप मिस करने की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि हर वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ ये वीडियो आपके लिए आएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ बना रहूँ 7वीं कक्षा से लेकर जब तक आप इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं करोगे या साइंटिस्ट नहीं बनोगे या हायर स्टडीज़ नहीं बनोगे या हमेशा के लिए आपके साथ रहूँ, तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, कुछ ना कुछ करने वाला हूँ। मैंने सोच रखा है, ठान लिया है कि जब तक आप मैथ्स में अव्वल दर्जे के नहीं बनोगे तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, हमेशा पढ़ूँगा, आपके गाइड की तरह आपको हर तकलीफ़ें मैं दूर करूँगा। जो भी है मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। साथ कैसा, पढ़ाई में आपको पढ़ना है, क्योंकि आप माँ बाप आपके लिए बहुत कुछ मेहनत करते हैं। उनका रोटी जो खाते हैं वो भी आपके लिए दे देते हैं, इतना कुछ मेहनत करते हैं। क्यों, मेरा बेटा आगे आए, सबसे अलग हैं, चैम्पियन और चैम्पियन बने, है ना। तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है ना उनके लिए कुछ करने के लिए। तो आप सिर्फ उनका मूल्य कैसे चुका सकोगे, आगे पढ़कर एक ऊंचे दर्जे पे पोस्ट पे जाओ और कमांडिंग पोजीशन पे जाओ और अपने माता पिता को अच्छी तरह देख लो, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है और उनका सहारा बनो, उन्हें मत छोड़ो, उनके साथ रहो। क्योंकि सब कुछ दुनिया में मिलता है मगर माँ बाप नहीं मिलते, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ, कहते हैं ना, माता पिता गुरु दैवम, ये 4 चीज़ गांठ बांध के रख लो, क्योंकि ये 4 चीज़ आपके साथ आएंगे। कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बहन, कोई आपके साथ नहीं आएगा। ये 4 चीज़, माता पिता गुरु दैवम। जन्म तो माँ देती है, पिता ज़िंदगी संवारते हैं, आपको राह दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं आपके लिए, मेहनत करते हैं, रोटी जुटाते हैं, सबके लिए, आपके लिए कपड़ा जुटाते हैं, आपकी शिक्षा के लिए पैसे देते हैं, हर किस पिताजी करते हैं। माँ घर संभालती है, पिताजी को संभालते हैं और आपको भी संभालते हैं, है ना। गुरुजी आपको शिक्षा देते हैं, अव्वल नंबर की दर्जा देते हैं, शिक्षा देते हैं, ताकि आप अच्छी तरह पढ़ो। मैं भी चाहता हूँ कि अच्छे आप मेरे स्टूडेंट्स हो, अच्छे बनो, इसलिए मैं आपके लिए कुछ करने वाला हूँ। तो कृपया आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन दबाइए और आगे हम लोग मिलते रहेंगे। मेरा एक भी वीडियो आपको मिस नहीं होगा ऐसे करने पर। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं बटन नहीं दबाओगे, मुझे नुकसान तो थोड़ा ही होगा, कुछ नहीं होगा, नुकसान तो आप ही का होगा, क्योंकि वीडियो मिस हो जाएगा। मगर सब्सक्रिप्शन
और बेल बटन, ये दोनों आपको करना है। और हो सके तो मेरे इसको लाइक करो और शेयर करो ताकि दूसरे लोगों के लिए भी भला हो, क्योंकि भलाई आपकी हो रही है, हम चाहते हैं कि भलाई दूसरों के लिए भी हो, है ना, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं। सो हमारी सभ्यता क्या बोलती है, हम सब लोगों की एकजुट मिलकर साथ में रहना है और एक दूसरे की सहारा बनना है ना, तो बनेंगे। ओके, हैप्पी साउंड। सो डियर स्टूडेंट, दोज हैव नॉट अंडरस्टूड what I have told them in Hindi is that I have been making videos for you, and possibilities are there you might skip out 1 or 2 videos, or you may not reach you, or sometimes you may forget to switch on to the videos, but in that case you might miss. In order to take care of such situations, what I advise you is try to subscribe to my button and press the bell button. What happens by this? So whatever video I post on YouTube, that will come to you from my channel, isn't it? So that's the reason YouTube has provided you this facility that subscribe that button and press the bell button. If you don't press the bell button, only subscribe button, only whatever video you have subscribed, only that video will come to you. सिर्फ जो बटन आपने दबाया है, अगर बेल बटन ना दबाएं तो क्या होगा, आपको लॉस होगा, नुकसान होगा। क्या नुकसान? अगर आप फ़र्ज़ कीजिए आपने बेल बटन नहीं दबाया और सब्सक्राइब किया, जो वीडियो मैं कर चुका हूँ, जो कर रहा हूँ, वही वीडियो आपको मिलेगी। बेल बटन दबाने से हर वीडियो में जो भी वीडियो डालूँ आपको मिल जाएगी। सो बाय प्रेसिंग बेल बटन, व्हाट ऑल वीडियोस आई पोस्ट विल रीच यू। दैट्स एडवांटेज यूट्यूब हैज़ गिवन यू। सो सब्सक्रिप्शन से यू आर नॉट गोइंग टू लूज मनी, मेक इट ए पॉइंट। सो हम पैसे गंवाते नहीं, सब्सक्राइब होता है, हम दोनों का बांधे हुए, हमारे दोनों का रिश्ता अच्छा बने रहे, इसलिए वो फैसिलिटी दिया गया है। सो विदाउट टॉकिंग मच विल गो अहेड विद द थिंग। सो ये मेरा 39th वीडियो है, एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल मैथ्स फ्रॉम बेसिक्स फॉर यू। एंड मैं हमेशा कह रहा हूँ कि लर्न मैथ्स राइट फ्रॉम बेसिक्स। आई एम हियर टू टीच यू मैथ्स राइट फ्रॉम बेसिक्स। राइट स्टूडेंट्स? अच्छा बच्चों, शुरू करें डेसिमल्स। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न fractions, which is one of the important part of mathematics. So your foundations are going to build right from here. So if you have to be good in mathematics, अगर आप mathematics में क्या उत्तम रहना चाहते हो, you want to be good in mathematics, आपको use of brackets, fractions और decimals में strong बनना है, अच्छी जानकारी रखना है, वरना आप मैथमेटिक्स में वीक रह जाओगे। इसलिए हम मैथमेटिक्स को डेसिमल्स, फ्रैक्शंस और एंड यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स को बहुत इम्पोर्टेंट से सीखना पड़ेगा अगर आप लोग मैथमेटिक्स में स्ट्रांग बनना है तो, वरना वीक रह जाओगे, क्योंकि ये फाउंडेशन है। यहाँ से आप तय करोगे कि आप मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होना है या नहीं। तो आज हम डेसिमल्स पढ़ेंगे। व्हाट आर डेसिमल्स? So a number system, a number which contains a whole number and fraction part is called a decimal. So whole numbers, all these things we'll study in the next chapter. What are whole numbers, natural numbers, then integers, all those things will number system में पढ़ेंगे next chapter पे। फिलहाल at present what you have to know is what is a whole number. For example, if you write 6, 0, 5, whatever it is number you write whole number, not a fraction and not a negative number, not a fraction. So whole number is what? It comprises of a whole number without any fraction. That is called a whole number. So now, decimals are a combination of a combination of whole numbers and fractions. It contains, on the other in simple language, it consists of a whole number and fraction part. That's the definition for decimals. Now you take this example, I'll write example. Now 6.72, right?
6.72. So this part is called a whole number. Whole number. And after this decimal place, towards the right of the decimal point is called what? Decimal part. They are called decimal part. Decimal part, right? Now, how did you get this decimals? Now, for example, if you have a number, a whole number, you take 7 or 9 or 6, I'll take this itself, 6.72. I'll take 6. If you divide 6 by 10, what happens? You get 0.6. So, you remove 1 0, add 1 point to the left, and once you write point your decimal towards the left, you have to add 0. Don't ever write as 0.6 means, don't write like this. Whenever you have to express a decimal, some number should be associated with this. इसके साथ कोई और नंबर रहना चाहिए. आप डेसिमल को 0.6 नहीं लिख सकते, गलत होगा, ये गलत जवाब. तो आपको इधर 0, क्योंकि होल नंबर नहीं है, सिर्फ 0.6 है इधर, सो ये रह जाएगा 0.6. और 0.6 लिखोगे 0.6. Let us imagine you have 60 divided by 10. So, ये तो fraction decimal बन ही नहीं सकता. It's not at all a decimal because it gets cancelled. On the contrary, if you have 60 divided by 100, what happens? 1 0 cancels. You're left with what? 6 by 10, that is nothing but 0.6, which is nothing but this, isn't it? This actually, I'm trying to teach you how you get this. So now I'll rub this point and take, supposing you divide 6 by 100, this becomes, now what happens here? If you remove 1 0, 1 point you have to put, that is 0.6. So this becomes 0.6. One more 0 is there. If you remove this, you have to add one more 0 here. So this becomes 0.06. I'll show you how did you get this. So supposing you have 6 by 1000, it means to say towards left you have to add 2 zeros, right, towards left. So this is a decimal. So this portion is called decimal part, and this portion is a whole number part. Here whole number is 0. So now I want to tell you something about, you take this number, an example. So let us take an example, 987. How did you get 987? That is nothing but, if you multiply 9 into 100, we get what? 900. Now 987, so 8. If you multiply this 8 by 10, you get 80, and 7. If you multiply this by 1, you get 7, and if you add all this, so it becomes 987. Ones place. So this 1 is called, and this 7 is called, and this 8, number 8 is called tens place. Tens place, isn't it? And this 9 is called hundreds place. Isn't it? So मैं ये बनना चाह रहा हूँ, अब तो ये होल नंबर पार्ट बन गया. कैसा आया? This 7 is ones place, 8 is tens place, and 9 is
We'll take another example, that is 9,876, right? 9,876. How did you get this? So this is nothing but 9 into 1000, that is 9,000. 8 into 100, that becomes 800. 7 into 10, that is 70. 6 into 1 equals to 6. So altogether 9876. So this place is called thousands place. And this place is called hundreds place. And this place is called tens place. And this place is called ones place. And so on. Now, likewise, if you have another number 9876.5. So as usual, you got 9 is thousand place, 8 is hundreds place, 7 is tens place, 6 is ones place, and what is this? This is 1 is 5 divided by 10. So it's a fraction. So 5 divided by 10, that is 0.5. So this is called tenth of a fraction, 5 by 10th. So what happens to this? This becomes, so once again this is 1000, this 800s, this tens, and this is ones, right? And this is fraction 5 by 10. So ये रहा decimals. How to nominate a decimal कैसे आप पहचानते हो? So और एक चीज़ मैं बताता हूँ. अब फर्ज कीजिए, let us assume you have a number 98 point. कैसा पढ़ोगे इसे? You have to read it as 98.76. Don't tell 98.76. 98.76 गलत जवाब. जब भी आप डेसिमल के बाद नंबर दे, जितना भी नंबर हो, एक एक करके बुलाना है उसको. 98.76 अगर फर्ज करो 543 आया, सो 98.76543 ऐसा बोलते हैं. सो डोंट टेल 98.76 543, ये गलत होगा. तो आपको कहना है 98.765. बहुत लोग क्या कहते हैं, when you have something that is 99 इसको क्या कहते हैं, सर उसने 98.87% स्कोर किया. गलत. 99.87% नहीं, 99.87%. जब भी आप फ्रैक्शंस को बोलोगे तो इंडिविजुअल से कहना है, इसको मिला के नहीं. तो 99.87% और 99. इसको भी 99.16. Don't tell it has 99.16%. गलत होगा. So try to correct this mistake. Because most of the people they go wrong with this. मैं देखो कम से कम अगर आप 100 आदमी को इंटरव्यू करोगे, उनसे पूछे कम से कम 30-40 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो 99.16 बोलने वाले. तो क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया, तो आपको मैं सिखा रहा हूँ. तो आज से जब भी तुम डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको इंडिविजुअली पुकारोगे, 99.16, 99.87, 99.99.
871. Don't tell 99.871, गलत. So 99.871. ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है. So remember this. Don't tell it. Don't pronounce it as 99.871. Wrong. 99.871, 99.87, 99.16. Whatever number you have to say individually. Okay. Now we have learnt what are decimals. So small definition, decimals. A number, simple words, which has a whole number, part, and a fraction part, a fractional part is called a decimal. Example, 99.81%. So it has whole numbers. 9. Here you can say 99. Don't say 99.81. It's wrong. 99 point. जब भी आप whole number बुलाओगे उसको कह सकते हो 99. Decimal को 0.81. 99.81. 35.1%. ये मत लो, ये लो. इससे ज़्यादा स्कोर करो एग्जाम में, मुझे खुश होगा, मुझे बहुत खुश होगा. So I want you to be happy with this. More than this score, still happy. And if you score 100%, I am the happiest person for you. Right? So try to aim at this 100%. You have to score 100 of 100, and it's possible if you start loving your maths, working on it right from today, and you attend my classes regularly, follow my classes regularly, definitely you'll get. So I had told you, if you want all my videos to come to you, press the subscribe button and bell button, and in that bell button tick all, so that every video I post you'll get it, otherwise you won't. So learn, and I'll help you to see that you score 100. So आप कर सकते हो. So you got this. Now next, decimal places. Decimal, what are they? Decimal places. उदाहरण दूंगा, इससे दूंगा 99% से 99.1%. So the number which contains the digits, the number of digits after the decimal points is nothing but decimal places. Here, what is the decimal place here? 19.1. So it is in 1.1. 0.1 means 1 by 10. That is 0.1 means what? 1 by 10. This is nothing but 0.1. 1 by 100 equals to, I'll give one more example. This is 1/10. 99.1/10. Okay. So what I'll write here, that is 99.1 by 10. So that becomes what? 99.1 divided by 10 is something. I'll teach all this later. Now I'll take 99.99. So this is what? 99.
99 by 100, which is nothing but 99.99%. अगर आप 100 और 100 नहीं कर सकोगे कुछ कारण से कम इतना तो मिनिमम आपको स्कोर करना ही पड़ेगा. 99.9 से जितना भी स्कोर करोगे बोनस, हम खुश होंगे, मुगाम खुश होंगे. So I'll be very happy if you score more than this, that is more than 99.9%. So now you got 10th place, 100th place, this is 10th place, 100th place. Now 99.989. So this also I'll add percent, I'll add percent for this also. This is what? 99 point, this is 989 by 1000. Percent means divided by 100, but here example I am giving, don't take literal meaning. So this is what? 99.989. So here, sorry, this is not 99. Yeah. So itna marks have score here. So it means to say, what is decimal places? Definition of decimal places. So the number of digits contained in the decimal part is called decimal places. So example 99.1, 99.91, 99.919, etc. See, out of decimal place you have 0.1. आउट ऑफ डेसिमल प्लेस के बाद आपको 91 मिल रहा है, इधर 99.919. तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है? 3. नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है? 2. नंबर ऑफ डिजिट 1. सो हियर नंबर ऑफ डिजिट 1, इधर 2, इधर 3. सो ये बताएगा आपको डेसिमल प्लेसेस, कितना डेसिमल प्लेसेस है ये बताएगा. ये टेंस में है, ये हंड्रेड्स पे है, ये 1000. ये कितना आया? दिस इज 1/10, दिस इज 91/100 and this is 919/1000. Okay, this is I got like this. इसको कहते हैं डेसिमल प्लेसेस. ओके, so we have learned decimals, decimal places. Next, what are you going to learn? Let us learn the types of decimals. We have like decimals and unlike decimals. So what are like decimals? If the decimal part has the same number of digits, for example 99.99, and other thing also it's called 99. For example, we have another 88.88. Another one we have 77.77. So what do you observe here? After decimal, after the point we have 2. Instead of writing that, see example, we'll take 99.99, 88.88. I am writing this so that you will not forget.
इसलिए आपको याद रखने के लिए ऐसा दे रहा हूँ. एंड 77.77. What do you observe here? Now I will take one more case. 99.1, 99. I will take this 99.81, 99.872. What do you observe here? You have one decimal plate, here 2, here 3. So in this case, the number of digits are 2. Number of digits are 2 after a decimal point. Number of digits are 2 after the decimal points. So they are like decimals. And these are unlike decimals. Unlike. Why? The number of decimal places are not same. So they are different. So we will have a small definitions, make a note, and I will give examples. So if the number of digits after the decimal points are same, like in this case, so they are called like decimals. मतलब अगर इस decimal point के बाद अगर decimal places same हो 9988 2 digits after the decimal point, ऐसे decimals को like decimals कहते हैं. अगर the number of digits after decimal point is not same, here it has 0.1, 0.81, 0.872, ऐसा रहा तो ये unlike decimal. इधर decimal places same नहीं है, different है, तो ये unlike decimals होगा. Okay, let us make a small note. Like decimals. Decimals having same number of decimal places are called like decimals. Examples 9.99, 8.88, 7.77, 17.66, 88.99, etc. So हम लोगों को क्या चाहिए? ये डेसिमल प्लेस के बाद द नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम हो तो लाइक डेसिमल्स. Look at this 9.99, 2 digits after the point, 2 digits after the, so it can be like this also. 9.999, 8.888, 6.733, 1.234, 999.99 and 9. So ये क्या हो रहा है? इधर भी देखो, you have same number of decimal places. 3 need not be only 2, it can be even 3. You take one more example. 9.1, 8.8, 9.7, 19.3, 99.1,
1, 99.9, then 888.8. सो क्या फ़र्क है, इधर एक डेसिमल प्लेस, ये 1 digit after decimal point in all these cases, here 3 digits after the decimal point in this case, here 2 digits after the decimal points, but all are like decimals. अगर इनमें से कोई एक चेंज हो गया तो इधर 3 3 3 इधर 2 हो गया तो ये लाइक डेसिमल का एग्जाम्पल नहीं बनेगा. ये दिस वोंट बी ए लाइक डेसिमल. अंडरस्टूड? सो the number of digits after the decimal point should be same, then only they are called like decimals. Now we'll go for unlike decimals. So you copy this, okay, I'll rub this, okay. What are unlike decimals? Unlike decimals, decimals not having same number of decimal places are called unlike, decimals. I have saved the time, I did not waste it, so you have understood this. They are called unlike decimals. Example is, here I'll write thing, here 88, here I'll write 1, and this is 0. This I call this as 3, and this I call this as 913. And same thing, you try to give different values. This is 19.954, this is 1, this is 3, and so on. So the number of digits should not be same after the decimal point. Such decimals are called unlike decimals. Okay, we have learned this. So those who have not followed unlike decimals, examples, that is 33.1, 63.07, 61.072, etc. Here the number of digits of the decimal point is 1, the number of digits of the decimal point is 2, the number of digits of the decimal point is 3. Such decimals are called unlike decimals. This is an example for this. So be careful with this. So you have nothing to do with whole numbers. Whole number, don't worry. Only the decimal part, there should be changes. Okay. बच्चों, और एक आपको इम्पोर्टेंट बात बतानी थी. फॉर एग्जाम्पल, I say 99.9. इस 99.9 के आगे 0.9 के आगे जितना भी zeros डाल लो, फिर भी ये 99.9 ही रहेगा. So I mean to say, after 99.9, whatever zeros what you add, but the value remains unchanged, unaltered. So it will be same. So it has no meaning. The value of this has no meaning. On the contrary, अगर 99.9 डेसिमल के बाद या 9 के आगे एक ज़ीरो ऐड करोगे, बहुत मतलब बनता है, बहुत फ़र्क बनेगा. इसको और इसको, इसके बाद ऐड करोगे तो वैल्यू नहीं है, इसके आगे अगर ज़ीरो ऐड करोगे तो मतलब आएगा. इसका मतलब क्या है? दैट इज 99.9 डिवाइडेड बाय 10. इसका मतलब, सो मतलब क्या है? इसका मतलब 99.9
9 को 10 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या हो गया 19.09 होगा। अगर और 99.9 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 99.009 बनेगा। ओके, याद रखना। और अगर एक वैल्यू 9.932, सो अगर फॉर एग्जाम्पल 5, सो आपके पास एक नंबर है 9325। अगर एग्जामिनर किसी ने कहा आपको so order decimal places here, we have 4 decimal places after the point 1 2 3 4. If you are asked to bring it to 2 decimal places or 3 decimal, let us start with 3 decimal places. So catch word now, 3 decimal places, 3 decimal places, fix to 3 decimal places. So what I'll do, the last digit 5, if it is greater or equals to 5, if it is greater than 5 or equals to 5, you cut this and add that one plus 1 year. So once you cut that, forget it. So you removed 1 year. So what happens to this? This becomes 9.933. This is your final answer. Got it? ये समझना है, कभी कभी एग्जाम में ये आपको नहीं रहेगा, अगर आ गया तो if you at all you have 9.9324, if you are asked इसको 3 decimal places में कन्वर्ट करना है तो it is not greater than or equal to 5, so the answer will be what? 9.932 itself. Ignore the 4th place. Okay, now one more case. Fix this number 99.872. Fix it to 2 decimal places. Same thing, this is not equals to or greater than 5, so this becomes what? This becomes 99.87. If you are asked to fix it to 1 decimal place, that is 99.1 decimal place, so this will equals to what? So the last digit, it is greater or equals to, it is greater than equal to 5, I'll remove 1 and plus I'll put 1 here, so this becomes 99.9. This is answer. So whatever is the number of digits after a decimal point, whether if it is greater than or less than 5, you remove that and put 1. If it is less than 5, just ignore that and whatever number he has asked. Now one more case. I'll tell you. You have 99.9. In this case, he'll ask you to fix it to 3 decimal places. But you don't have 3 decimal places here, you have only 1 decimal place. In such an event, such a situation, अगर आप कोई कहें इसको 3 decimal places पे रखो, तो आपके पास क्या है, सिर्फ एक ही decimal place है 19.9, तो आपको क्या करना पड़ेगा, this is 99.900. So क्या हो गया 19.90, 3 decimal place आ गया, यानी कि 0 का मतलब ही नहीं है, वैल्यू नहीं है, फिर भी आपको 99.900 से बताना पड़ेगा। तो ये मतलब 3 decimal places को आपने फिक्स किया है। सो आपको ये याद रखना है, मगर ये फिक्स इधर मत ऐड करो 009, ऐसा मत करना, ऐसा करोगे तो गलत जवाब। अमिताभ
बच्चन जी नाराज होंगे, गलत जवाब, और आपको उठा के फेंक देंगे. सो डोंट डू दिस. सो दिस इज रॉन्ग. सो यू हैव टू राइट 99.900. Okay? Whether it is 2 places or 3 places or 10 places, go on adding the zeros and show them so many places. Done? Okay. Now, comparing decimals. Comparing decimals. मतलब क्या है इसका डेसिमल्स? कंपेयरिंग डेसिमल्स मतलब आपने सर्फ एक्सेल का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा ना, 2 आदमी बाजू को जो खड़े रहते हैं, उसका सफ़ेद रंग का और इसका सफ़ेद का, किसका सफ़ेद ज़्यादा है? तो सफ़ेद एक रिन या सर्फ एक्सेल का क्या आएगा, ये बता देगा ये ज़्यादा वाइट है ना, सफ़ेद है. उसी तरह अगर आपके पास 9.01 एंड 9.001 इन दोनों में से बड़ा वाला फ्रैक्शन छोटा वाला फ्रैक्शन को सा है, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट मेथड आपको होल नंबर्स को कंपेयर करना है. यहाँ पे होल नंबर्स आर इक्वल, राइट? व्हेन होल नंबर्स आर इक्वल, फॉरगेट इट. देन होल नंबर्स दोनों एक ही है, तो इसको छोड़ दो. उसके बाद नेक्स्ट डेसिमल पार्ट को जाओ. डेसिमल पार्ट के अंदर टेंस पार्ट को तो चेक करो, टेंस पार्ट भी सेम है. देन उसके बाद 100 प्लेस को जाओ. 100 प्लेस के अंदर इधर 1 है, इधर 0 है, तो कौन सा बड़ा होगा? डेफिनेटली ये 9.01 इज ग्रेटर देन 9.001 बिकॉज 9.1 को 100 से डिवाइड 1000 से डिवाइड कर रहे हो. सो दिस इज 100 से डिवाइड कर रहे हो, तो दिस बिकम्स 9 पॉइंट. सो दिस इज ग्रेटर. सो अनदर केस, वन एग्जाम्पल, वन इज 18.90 and 9.99. What about this? इसके बारे में क्या? तो फर्स्ट कंपेयर योर होल नंबर्स. होल नंबर्स आर डिफरेंट because 18 is greater than 9, so don't see your decimal part at all. Straight away 18.90 is greater than 9.99, right? Comparing decimals ऐसा बनता है. नेक्स्ट केस, इसको मिटा दूं? हाँ सर मिटा दीजिए. कोई रोक रहा है आपको? कोई नहीं. कोई माई कलाल आपको रोकेगा नहीं. ऐसा कहोगे आपका प्यार रोक देगा. ओके, और लेट अस सी 99.900 and 99.910. सो यहाँ पे कंपेयर करो. ये होल नंबर्स आर सेम 99, तो इसको छोड़ दो. 1000th प्लेस, दैट इज 10th प्लेस चेक करो. 10th प्लेस पॉइंट, इसके बाद जो भी आता है दिस 10s, 100, 10s, 100, 1000s. ओके, सो यहाँ पे डिवीजन पे डिपेंड होता है, निर्भर होता है. सो इधर 9 है, इधर भी 9 है. सो 1000th प्लेस, ओके फॉरगेट इट. नो आपको रहेगा 100th प्लेस चेक करना. 100th प्लेस पे ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये बड़ा वाला 99.910 इज ग्रेटर देन 99.900. मैंने बताया था डेसिमल प्लेस डिजिट के बाद इस 0 का वैल्यू ही नहीं है.
इसका भी वैल्यू नहीं है, तो ये क्या है? दिस इज, आई एम ट्राइंग टू शो यू, मेक यू लर्न. दिस इज 99.91 and 99.9. You can see 99.91 is higher than 99.9, है ना? So this is definitely greater. So this 99 point is greater than, you can add different zero, this is greater than this. We will take one more case. $88.008, or instead of that I'll write 213 and 88.214. Okay, so here 88 यहाँ पे भी है, 88 भी यहाँ पर भी है. So the whole numbers part both are equal. Forget it, इसको छोड़ दो. Let us go for tens. Tens के अंदर इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, उसको भी छोड़ दो. इसको लो, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, उसको भी छोड़ दो. इधर 3 है, इधर 4 है. अब दोनों में से बड़ा वाला कौन सा? डेफिनेटली ये है ना. Here 88.214 is greater than 88.213. So here are comparing of decimals. बच्चों, मैंने इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम चुन रखा है आपके लिए. आपको बताना इन डेसिमल्स में इन वैल्यूज के अंदर कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है. तो पहला वाला लेंगे, उधर ही बता दूंगा. सो हियर फर्स्ट केस नंबर 1, दैट इज 99.12 and 97.21. So compare this first whole numbers. 99 is greater than 97, therefore 99 is greater than 97, therefore 99.12 is greater than 97.21. फर्स्ट का आंसर हो गया. समझ में आ गया? राइट. कॉपी कर लो, पॉज करो, कॉपी करो. सेकेंड प्रॉब्लम 3.1, 3.10 and 3.11. तो मतलब क्या है? This also equals to what? 3.10. So after 1 0 has no value, this can be also written as 3.1 and 3.11. So here 3.1, but we have 3.11, 10 times higher than this. So this is, therefore 3.11 is greater than 3.1. याद रखो. So this 0 has no value, I have removed this 0 and I put 3.1. So after decimal, after this digits, any number of zeros, no value, straight away 3.10 is nothing but 3.1. Okay, done. Now this is also over. I'll rub this. Problem number 3, 8.001 and 8.012. So whole number part is okay. Here tens place also is same, but hundreds place is different. This one, here 0. So 8.012 is greater than 8.001. Remember this. So first check the whole number, then check the 10th place,
100th place and 1000th place. This is also over. Third, 0.631 and 0.647. So here both are same the point, no whole number, only decimals. So here in the 10th place we have 6, forget it. Here in the 100th place we have 3 and here we have 4. Therefore 0.647 is greater than 0.631. Remember this. Done. This is also over. We'll take 0.001 and 0.007. So either they are same, this is also same, this is also same, but here we have 1 and here we have 7. So which is greater? This. So this is therefore 0.007 James Bond is greater than 001. ये लास्ट का जेम्स बॉन्ड था, ये पहले वाला जेम्स बॉन्ड था. जब जेम्स बॉन्ड बनाया गया तो 007 जेम्स बॉन्ड, तो 007 is greater than 1. See the 1000th place, 10th place also same, 100th place also same, but 1000th place is different. That's why this is. So this is all about thing. Now dear students, I'll teach you something which is important, which you need to know. Now supposing you have 1 by 10. So 10 means what to do? You write first 0, 10 means a point and 1. So whenever we have 1 by 10, it is 0.1. If we have 2 by 100, okay, we'll take 1 only because I don't want you to get confused. 1 by 100. So what happens here? 0.01. So 2 places 10, 10, no 0 here. 1 by 10 is 0.1, isn't it? 1/10 means 1.1. 1 by 100 is 0.01. 1 by 100 equals to 0.01000, 1.01. So 1 by 1000 is 0.001 and so on. And so on, it continues. The process continues till you try it. करते करते थक जाओगे मगर ये जीरो बढ़ते रहेंगे, तुम करते रहोगे ये जीरो बढ़ते रहेंगे, ऐसा ही होगा ना. तो भलाई है यहाँ पे स्टॉप कर दो, अच्छे बच्चों की तरह. So this is about all about decimals. We will go for next addition, subtraction, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. कैसा करते हैं सीखेंगे बहुत आसान से, और आसान से सिखाऊंगा आपको. डन डन सर, इतना अच्छा से सिखा रहे हैं आप, क्यों नहीं पढ़ेंगे हम? अच्छा पढ़ेंगे सर, ये हमारा वादा है आपसे. अगर ये सीख जाओगे ना, फ्रैक्शंस, ब्रैकेट्स एंड डेसिमल्स, सच्ची आपको पकड़ने वाला ही नहीं, आप तो एकदम टॉपर बन जाओगे. टॉपर ऐसे ही बनते हैं, बेसिक्स को अच्छी तरह समझ जाओ. समझ गए, खोपड़ी में, दिमाग में, आपके हार्ड डिस्क में, मेमोरी में रख लो. ये जब भी दिन में 1 बार 2 बार याद करो, और नेक्स्ट दिन भी याद करो, 3 दिन याद करो, बस हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा. मैं आपके एक उदाहरण दूंगा. आप साइकिल सीखा था ना, साइकिल सीखने के बाद इतने साल हो गए आपको, अगर आपसे कहूँ कि साइकिल चलाओ
तो साइकिल चलाओगे। एक अगर आप साइकिल या कार या मोटरसाइकिल या कुछ भी हो चलाओगे ना, कितने भी दिन हो जाए चलाओगे। अगर स्विमिंग पानी में कूदोगे, अगर स्विमिंग सीखा है, अभी भी स्विमिंग तीनों, अब से कोई बोला पानी में डाइव मारो और तैरो, तो डेफिनेटली आप स्विम करोगे। क्यों? सीखा है आपने। मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, अगर आप अच्छी तरह सीख जाओ, सो ड्राइविंग, स्विमिंग, ऑल दिस थिंग्स वंस यू लर्न एंड रिफाइन इट, अगर अच्छी तरह सीख जाओगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मैथ्स भी वैसा ही है, अगर एक बार सीखने पर अच्छी तरह याद रखोगे हमेशा के लिए याद रह जाएगा। मगर गणित में क्या है, कम से कम एक वीक में एक बार तो आपको एक बार ग्लैंस करना पड़ेगा, वरना आप भूल जाओगे। मैथ्स ऐसा ही है। और अगर आप, यू वोंट बिलीव मी, यूं शकुंतला देवी, द मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स, जो गणित की देवता कहते हैं उसको, उतना अच्छा ये करती थी वो भी हमेशा किताबों में उलझे रहती थी, कुछ ना कुछ करते रहती थी। क्यों? दिमाग को आप फ्रेश रखना है आपको। कभी अगर आप आयरन, स्टील को एक जगह पे रख दो बहुत दिन के लिए, क्या हो जाए, जंग पकड़ जाएगा, रस्ट हो जाएगा, उसको भी जंग लग जाएगा ना। उसी तरह के दिमाग को अगर बेकार छोड़ दोगे, एन आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, एंड खुसूसन मैथमेटिक्स, ये आपको तेनालीरामा बीरबल जैसा चतुर बनाएगी। टू बिगिन विथ, शुरुआत में हम आपसे कहेंगे इलू इलू, एंड यू बताओ इलू का मतलब क्या है। आप बताएंगे इलू का मतलब, सर सब कुछ जानते हैं, सब लोग जानते हैं इलू का मतलब आई लव यू, बट यू आई लव यू टू, बिकॉज यू आर जस्ट लाइक माई किड्स एंड आई वॉन्ट यू द बेस्ट फॉर माई किड्स। डियर स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम माई साइड आई हैव डिस्कवर्ड ए नया वर्ड, डिस्कवर किया हूँ, एक नया लफ्ज़ आपके लिए ढूंढा हूँ, वो है ईटू ईटू। ईटू का मतलब आई टीच यू। मैथमेटिक्स कंप्लीट करूँगा। मैंने ये भी सोच रखा है आपके लिए कि आप अब 7वीं कक्षा में हो, इसके बाद 8वीं जाओगे, उसके बाद 9th, उसके बाद 10th PUC एंड इंजीनियरिंग और साइंटिस्ट या कुछ ना कुछ बनोगे, हाई स्टडीज़ बनोगे। तो मैंने सोच रखा है कि मैं आपके लिए 7th स्टैंडर्ड से लेकर जब तक आप अपना डिग्री नहीं कंप्लीट करोगे तब तक मैं आपके साथ रहूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा नहीं रहूँगा, हमेशा आपके साथ रहूँगा, जब तक जान है जहाँ है मैं आपके साथ रहूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। सो इसके लिए क्या करना, आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या है, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आपको पहुँचना चाहिए। किस तरह पहुँचेगी, ये चांसेस है कि आप लोग मिस कर पाओगे या भूल जाओगे या आपको लिए नहीं आएगा, ढूंढते रह जाओगे। तो इसलिए एक तरकीब है, जो तरकीब मैं बताने वाला हूँ उसको गांठ बांध के रख लो, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है और आपके लिए कोई सा भी मेरा जो वीडियो मैं डालने वाला हूँ वो वीडियो मिस नहीं होगी। उसके लिए क्या करना है आपको, मेरे चैनल के अंदर सब्सक्रिप्शन बटन है उसको दबाइए, और बेल बटन है वो बेल बटन को भी दबाइए। इसका मतलब क्या होगा, मैं जो भी वीडियो यूट्यूब में डालूँगा वो हर वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। तो आप मिस करने की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि हर वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ ये वीडियो आपके लिए आएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ बना रहूँ 7वीं कक्षा से लेकर जब तक आप इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं करोगे या साइंटिस्ट नहीं बनोगे या हायर स्टडीज़ नहीं बनोगे या हमेशा के लिए आपके साथ रहूँ, तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, कुछ ना कुछ करने वाला हूँ। मैंने सोच रखा है, ठान लिया है कि जब तक आप मैथ्स में अव्वल दर्जे के नहीं बनोगे तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, हमेशा पढ़ूँगा, आपकी गाइड की तरह आपको हर तकलीफ़ें मैं दूर करूँगा। जो भी है मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। साथ कैसा, पढ़ाई में आपको पढ़ना है, क्योंकि आप माँ बाप आपके लिए बहुत कुछ मेहनत करते हैं, उनका रोटी जो खाते हैं वो भी आपके लिए दे देते हैं, इतना कुछ मेहनत करते हैं। क्यों, मेरा बेटा आगे आए, सबसे अलग हैं, चैम्पियन और चैम्पियन बने, है ना। तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है ना उनके लिए कुछ करने के लिए। तो आप सिर्फ उनका मूल कैसे चुका सकोगे, आगे पढ़कर एक ऊंचे दर्जे पे पोस्ट पे जाओ और कमांडिंग पोजीशन पे जाओ और अपने माता पिता को अच्छी तरह देख लो, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है और उनका सहारा बनो, उन्हें मत छोड़ो, उनके साथ रहो, क्योंकि सब कुछ दुनिया में मिलता है मगर माँ बाप नहीं मिलते, है ना। इसलिए
मैं कहता हूँ, कहते हैं ना, माता पिता गुरु दैवम, ये 4 चीज़ गांठ बांध के रख लो, क्योंकि ये 4 चीज़ आपके साथ आएंगे। कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बहन, कोई आपके साथ नहीं आएगा। ये 4 चीज़, माता पिता गुरु दैवम। जन्म तो माँ देती है, पिता ज़िंदगी संवारते हैं, आपको राह दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं आपके लिए, मेहनत करते हैं, रोटी जुटाते हैं, सबके लिए, आपके लिए कपड़ा जुटाते हैं, आपकी शिक्षा के लिए पैसे देते हैं, हर किस पिताजी करते हैं। माँ घर संभालती है, पिताजी को संभालते हैं और आपको भी संभालते हैं, है ना। गुरुजी आपको शिक्षा देते हैं, अव्वल नंबर की दर्जा देते हैं, शिक्षा देते हैं, ताकि आप अच्छी तरह पढ़ो। मैं भी चाहता हूँ कि अच्छे आप मेरे स्टूडेंट्स हो, अच्छे बनो, इसलिए मैं आपके लिए कुछ करने वाला हूँ। तो कृपया आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन दबाइए और आगे हम लोग मिलते रहेंगे। मेरा एक भी वीडियो आपको मिस नहीं होगा ऐसे करने पर। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं बटन नहीं दबाओगे, मुझे नुकसान तो थोड़ा ही होगा, कुछ नहीं होगा, नुकसान तो आप ही का होगा, क्योंकि वीडियो मिस हो जाएगा। मगर सब्सक्रिप्शन और बेल बटन ये दोनों आपको करना है, और हो सके तो मेरे इसको लाइक करो और शेयर करो, ताकि दूसरे लोगों के लिए भी भला हो, क्योंकि भलाई आपकी हो रही है, हम चाहते हैं कि भलाई दूसरों के लिए भी हो, है ना, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं। सो हमारी सभ्यता क्या बोलती है, हम सब लोगों की एकजुट मिलकर साथ में रहना है और एक दूसरे की सहारा बनना है ना। तो बनेंगे, ओके। Happy sound. So dear student, those who have not understood what I have told them in Hindi is that I have been making videos for you, and possibilities are there, you might skip out 1 or 2 videos, or you may not reach you, or sometimes you may forget to switch on to the videos, but in that case you might miss. In order to take care of such situations, what I advise you is, try to subscribe to my button and press the bell button. What happens by this? So whatever video I post on YouTube, that will come to you from my channel, isn't it? So that's the reason YouTube has provided you this facility, that subscribe that button and press the bell button. If you don't press the bell button, only subscribe button, only whatever video you have subscribed, only that video will come to you. सिर्फ जो बटन आपने दबाया है, अगर बेल बटन ना दबाएं तो क्या होगा, आपको लॉस होगा, नुकसान होगा। क्या नुकसान? अगर आप फ़र्ज़ कीजिए आपने बेल बटन नहीं दबाया और सब्सक्राइब किया, जो वीडियो मैं कर चुका हूँ, जो कर रहा हूँ, वही वीडियो आपको मिलेगी। बेल बटन दबाने से हर वीडियो में जो भी वीडियो डालूँ आपको मिल जाएगी। सो बाय प्रेसिंग बेल बटन, व्हाट ऑल वीडियोस आई पोस्ट विल रीच यू। दैट्स एडवांटेज यूट्यूब हैज़ गिवन यू। सो सब्सक्रिप्शन से यू आर नॉट गोइंग टू लूज मनी, मेक इट ए पॉइंट। सो हम पैसे गंवाते नहीं, सब्सक्राइब होता है, हम दोनों का बांधे हुए, हमारे दोनों का रिश्ता अच्छा बने रहे, इसलिए वो फैसिलिटी दिया गया है। सो विदाउट टॉकिंग मच विल गो अहेड विद द थिंग। सो ये मेरा 39th वीडियो है, एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल मैथ्स फ्रॉम बेसिक्स फॉर यू। एंड मैं हमेशा कह रहा हूँ कि लर्न मैथ्स राइट फ्रॉम बेसिक्स। I am here to teach you maths right from basics, right students? अच्छा बच्चों, शुरू करें decimals. So आज का टॉपिक क्या है? How to convert decimals into fractions and fractions into decimals. बहुत आसान है, अगर मुश्किल भी है तो मैं आपके लिए आसान बना दूंगा, ये हमारा वादा है आपसे। So now, what is the subject? To convert decimals into fractions. So convert decimals into fractions. I had told you fractions are nothing but decimals. मैंने आपको बताया डायमेंशंस क्या होता है, बताऊंगा आगे। फर्स्ट कीजिए, विल टेक वन नंबर, सो वी हैव टू कन्वर्ट decimals into fractions. So this is convert decimals into fractions. I'll take to begin with 0.9. We have a decimal 0.9. मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसा करेंगे?
what we'll do, I'll write divide this by 1. So 0.9 divided by 1 is 0.9 itself. So be careful here. यहाँ पे आपको बहुत होशियार रहना है, क्योंकि शिफ्टिंग द पॉइंट टुवर्ड्स राइट और शिफ्टिंग द पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट मेक लॉट ऑफ डिफरेंस. ये आपको जानना है. अगर मैं इस पॉइंट को राइट साइड लूँ तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, अगर पॉइंट को मैं लेफ्ट में लूँ तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये आपको जानना है. तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं, अगर इस पॉइंट को मैं राइट साइड शिफ्ट करने वाला हूँ तो मुझे एक 0 ऐड करना पड़ेगा. डन. सो क्या हो गया ये, दिस इज नथिंग बट, दिस द ईजिएस्ट मेथड आई एम टीचिंग यू. दिस बिकम्स 9/10. तो क्या हो गया, डेसिमल जाके फ्रैक्शन बन गया. सो अगर इसमें से काटने का अगर फैसिलिटी हो तो काटो, इधर कोई नंबर से कटेगा नहीं, तो इसलिए ऐसा ही छोड़ दो. सो आंसर इज 9/10. लेट अस और दूसरा उदाहरण लेंगे 0.09. एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. सो दिस इज, आई आगे वंस अगेन आई डिवाइड दिस बाय 1. सो मुझे क्या करना है, आई वांट कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन. सो व्हाट आई विल डू, आई विल शिफ्ट दिस टू 2 places. 2 प्लेस शिफ्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 zeros ऐड करने का. जितना पॉइंट्स आपको शिफ्ट करना है, जितना डिजिट्स को आपको शिफ्ट करना है, उतना जीरोस आपको ऐड करनी पड़ेगी. ये याद रखना है आपको. तो ये क्या बन गया, दिस बिकम्स 9/100. इधर सिर्फ आफ्टर द डेसिमल पॉइंट सिर्फ एक डिजिट था, और यहाँ पे 0.09 2 डिजिट्स बन गया. तो 2 डिजिट शिफ्ट करने के लिए आपको 2 zeros ऐड करना पड़ेगा. तो लीजिए और एक उदाहरण लेंगे 0.009. आई वंस अगेन डिवाइड दिस बाय 1. सो मुझे कितना शिफ्ट करना है पॉइंट्स, अब ये रहा 1 2 3 प्लेसेस. सो क्या हो गया, इधर 3 प्लेसेस के लिए आपको 9/1000 बन गया. तो ए फ्रैक्शन. सो कहने का तात्पर्य यह है कि जितना डिजिट आप शिफ्ट करोगे उतना जीरोस आपको डिनोमिनेटर में लगाना है टुवर्ड्स राइट. दैट इज इफ यू आर शिफ्टिंग इट टुवर्ड्स राइट. सो मैं आगे बताऊंगा अगर लेफ्ट करोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है. ओके 9. सो अगर डिवाइड करके देखो, सो फॉर एग्जाम्पल आई विल डिवाइड, क्रॉस चेक करेंगे इसको. सो 10 डिवाइडेड बाई 9 होता है क्या, नहीं. तो क्या करूंगा, मैं इसे एक 0 डालूंगा, उसके बाद 0 डालने के बाद एक पॉइंट डालूंगा इधर. तो यहाँ पे एक 0 डाल सकते हैं हम. जब थोड़े टेक्स्ट बुक्स में क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं पॉइंट डालो करके. जब भी पॉइंट डाल दो उसके लेफ्ट साइड में 0 डालना आपको क्या बोलते हैं, कंपलसरी है, मैंडेटरी है. सो ऐसा डालने से यू राइट 0 पॉइंट. तो मतलब है डेसिमल बना रहे हो. अगर कुछ ना लेकर लेफ्ट साइड, अगर ये पॉइंट मिस हो गया तो पूरा होल नंबर बन जाएगा. तो इसलिए जब भी डेसिमल का इस्तेमाल करते हो 0 लगाइए. 0 पॉइंट कितने बार जाएगा, ये 9 टाइम्स. सो ये 90. सो माइनस करो 0 0. जब तक आपको 0 0 नहीं मिलेगा तब तक आपको डिवाइड करना पड़ेगा. सो आ गया आपका आंसर. सो दिस इज 0.9. दैट इज पॉइंट, वी कांट राइट लाइक दिस 0.9/10. कुछ गंदा लगता है, ऐसा मत लिखना. कभी भी जब भी डेसिमल लिखते हो उसके साथ एक दोस्त को लगा दो 0. ओके, ये 0 दोस्ताना निभाता है इसके साथ. सो 0.9/10. सो इसका मतलब बनता है, इसका मतलब नहीं बनता, ये गलत तरीका है. थोड़े लोग ऐसे लिखते हैं, आपने देखा होगा, डेसिमल बता 0.8 ऐसा लिख देते हैं. ये गलत है, ऐसा नहीं करना है आपको. जब भी डेसिमल लिखते हो तो एक 0 लिखो. क्या फ़र्क पड़ने वाला है, थोड़ी सी शाई, थोड़ी सी इंक ही आपका नुकसान होगा ना, मगर
बाद में वजन तो आएगी। ओके, ये रहा कन्वर्ट। नाउ और एक प्रॉब्लम लेंगे, आई विल रब दिस। कॉपी करना है तो कर लीजिए। Let me take, so let us take 0.4. As usual, divide this by 1. So I am going to shift it to one place, क्योंकि 1 डिजिट है ना, एक ही डिजिट है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो मैं आपको इधर शिफ्ट कर रहा हूं। तो ये क्या बन गया? 4/10. So what is this? 4/10. आगे घटेगा ये, हाँ काट सकते हैं, देखो 2 2s are 2 5s are, this becomes what? 2/5 is the answer. आसान तरीका है ना, बहुत आसान है ना, तो ये सीख लो। ओके, नाउ विल टेक अबाउट 0.60। ओके, अब बताइए मुझे कितना पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इधर कितना, सो मैं इसके लिए 1 डालूंगा, है ना। तो मुझे क्या 2 जगह शिफ्ट करना है क्या? नहीं, मतलब है ये गलत होगा, क्योंकि अगर मैं 2 पॉइंट शिफ्ट किया हूं, 2 zeros ऐड करूं, ये गलत होगा। गलत जवाब, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं ना, गलत जवाब। कौन बने केबीसी में? तो गलत जवाब। सो ये रॉन्ग है। इसको क्या कहते हैं? 0.6 है ना, 0.6 डिवाइडेड बाई 1। क्यों? 0.6 के बाद, फॉर एग्जाम्पल 0.6 के बाद जितना भी 0 डाल लो, इसकी वैल्यू नहीं है। टूवर्ड्स द राइट साइड पे जितना भी 0 डालोगे, इसका वैल्यू ही नहीं है। तो क्या बन गया ये? दिस इज नथिंग बट 0.6। सो दो इट इज 0.60, इट हैज नो वैल्यू, सो इट इज 0.6/1, that is nothing but I am going to shift this one place, I'll add on 0. तो ये क्या हो गया? This becomes 6/10. So this is 2 3s are 2 5s are. So ultimately क्या बना? 3/5. That is 0.6 equals to 3/5. This is your answer. यहाँ पे ध्यान दो, ये गलती मत करो। मैंने देखा है थोड़े बच्चों को 0 पॉइंट शिफ्ट करना है ना, जितना जगह शिफ्ट करना सर ने बोला है शिफ्ट करो, 2 जगह शिफ्ट किया, 2 0 डाल दो, गलत। अगर फर्ज करो यू हैव वैल्यू 0.60, देखिए यहाँ पर अगर 1 आ गया इधर, other than 0 any other value, then it becomes 3 places. फर्ज करो, remember here in the event you have 0.6, you have to divide by 1, isn't it? So deliberately what examiner will do, क्या करेगा examiner आपके लिए? हाँ ये बोल दूंगा। So you have 3 places, इसके लिए क्या करना है आपको? 1 डाल दो, कंपल्सरी 1 डालो, 2 या 3 मत डालो, जवाब तो गलत हो जाएगा। 1 डालो। इधर कितना जगह शिफ्ट करना है? 1 2 3 जगह है, 3 डिजिट्स आफ्टर द पॉइंट। सो यू आर शिफ्टिंग 3 places, isn't it? This is 1 2 3 places. So 1 2 3 zeros, that becomes what? 601/1000. This is your answer. समझ में आया? अगर 0.600 रहा तो कितना जगह शिफ्ट करना है मुझे? डोंट मेक इट 1 2 3, नो, बिकॉज आफ्टर द डेसिमल प्लेस
टेंथ्स का जो है उसको याद रखो, इधर 0 है इसका नो वैल्यू, सो बिकॉज ऑफ डेसिमल प्लेस इफ देर इज अनदर नंबर अदर देन 1 अदर देन 0 1 2 3 वॉट एवर देन इट काउंट्स, एक वैल्यू बनता है, ये वैल्यू नहीं बनेगा 0.6000 जितना भी 0 डालो मगर सिर्फ 0.6 ही उसका वैल्यू है, समझ गए। तो ये क्या हो गया 0.6000 कितना भी 0 डालो by 1 is nothing but 0.6 by 1 itself, याद रखो ये। एंड इसको शिफ्ट करोगे एक 0 ऐड करोगे, दैट इज 6 by 10, दैट इज 3 by 5, मैंने बताया इधर। ओके तो बच्चों डेसिमल्स बहुत आसान है, उसके साथ आपको खेलना है, मतलब पढ़ना है। अगर समझ जाओगे तो मुश्किल नहीं समझाओगे, नहीं समझ सके तो मुश्किल हो जाएगी। तो आसान से, अगर मुश्किल भी हो तो मैं हूँ ना आपके लिए, आसान कर दूंगा। इतना अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा कि आप लोग कभी गलती नहीं करोगे, ये हमारा विश्वास, हम पर विश्वास रखो और ये हमारा वादा है आपसे। ओके विल टेक अनदर एग्जाम्पल। We'll take 75 by 1, तो मैं इसको एक जगह शिफ्ट कर रहा हूं, तो एक 0, तो ये बन गया 75 by 10। सो अगर 2 से डिवाइड करोगे ये नहीं जाएगा, सिर्फ 5 से होगा, तो 5 2 जा 5 1 जा, इधर क्या रहेगा 2 रहेगा, डिवाइड करो, सो दिस बिकम्स 5, दैट इज इक्वल्स टू 15 by 2। अगर मैं सिखाऊंगा डिवीजन भी सिखाऊंगा, आगे मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, फिलहाल दैट इज ओके, हम जरूरत बनता है सिखाता हूं, दैट इज 75 डिवाइडेड बाई 10। सो दिस इज कॉल्ड, हाँ सीख लो, दिस इज कॉल्ड कोशेंट, दिस डिवाइजर एंड दिस इज रिमाइंडर, इसको ऐसा ही बोलते हैं। सो this is divisor, quotient and remainder. So note this. So I'll do like this now. 75 divided by 10. So 10 sevens are 70, isn't it? तो बच्चा कितना 5, तो you can't divide this. So मैं इधर एक पॉइंट लगा दूंगा और एक 0 डाल दूंगा, तो कितने बार जाएगा 5 बार। सो 5 is 50, सो आंसर कितना 0 0। 7.5 is nothing but what, so 7.5 by 10 is what 15 by 2, so that's what I done। So we'll do this now, we have noted down this bigger value divided. Now I'll take this 15 divided by 2, 2 sevens are 14, you get 1 year, so 1 is not divided until it becomes 0, you have to divide, so put a point here, add on 0, so this becomes 5 10, so you got 0. What is the answer? 7.5. whether I divide 75 by 10 और 15 by 2, the answer is same। समझ में आ गया? So ये मैं आपको सिखाऊंगा। First we'll go with conversion of decimals to fractions and later on fractions to decimals and then addition, subtraction, division and multiplication, सब कुछ सिखाऊंगा आपको, डरिए मत, हम हैं ना। Now we'll take another value 19 point, we'll take something which can be cancelled, that is 19.8. Okay, so here the value of the 19, we have nothing but a whole number and we have one decimal place, so as usual divided by 1, isn't it? So I'll shift one place,
So I'll add 1 0. This becomes 198 by 10. So 5 तो नहीं कैंसिल क्योंकि 8 है. You have an even number. So here is even number. So 2 5 times 2 9s are 18. Again 1 2 9s are 18. That is 99 by 5. Now 19.8 equals to 99 by 5. समझ में आ गया? सो डिवीजन से भी मैं बताऊंगा आगे, इतना जान लो. इसके लिए काफ़ी है, आगे दिखाएंगे पढ़ेंगे. सो नाउ वी आर कन्वर्टिंग decimals to fractions. And one more thing, what is this? We'll take 6.316 by nothing, that is 6.316. As usual इसको क्या करना है आपको, ये लिख दो नीचे डिनोमिनेटर पे. इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड बॉटम उनको डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर पे एक लिख दो. And how many places? This is 1, 2, 3 places are there, isn't it? So 3 places I am shifting. So क्या हो गया ये? 1, 2, 3. So what is this? This equals to this is 6316. 6316 by 1000. तो डिवाइड करो तो 2 500 टाइम्स 2 3s are 1s are 2 5s are 10, इधर 8 2 8s are 16. So this is 3158 by 500. Okay. So again 2, तो ये 250 टाइम्स आएगा. 2 2s are 2 5s are 2 0. Okay. So this becomes 2 1s are. So 1 will be here. 2 5s are 10. 1 will be there. 2 7s are 14. So 9s are 18. So ये क्या हो गया? This becomes what? 1579 by 250. अब रहा, हमने राइट साइड को शिफ्ट किया, एक 0 ऐड किया है ना. अब ध्यान से सुनिए, मुझे अब ये 0 को हटाना है. इस 0 को हटाने कैसे करने का? तो ये क्या है? दिस इज 0.00 ना. इसके बाद कोई वैल्यू नहीं तो हम डाल सकते हैं 1579.00 डाल सकते हैं ना. आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी zeros you want? No issue. But here it has 0. Now if you want to shift, you want to cancel this 0, see here you shift it to one place towards the left of the decimal place and cancel 1 0. Okay. So ये क्या बन गया? This becomes what? 157.9 by 25. जब आपको ये जीरो को कैंसिल करना है डिनोमिनेटर में, पॉइंट को इधर लेफ्ट के साइड लेके आओ. अगर ऐड करना है तो 0 ऐड करना है तो देखो, इफ यू वांट टू शिफ्ट दिस, व्हाट वी यूज्ड टू डू? वी यूज्ड टू ऐड 0, isn't it? So this used to become what? 1579 by 250, right? So I want to remove this 0. So what I'll do? This decimal point I'll shift it to the left. So it became what? 1. It becomes by 25. This is the answer. So आपको शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट में क्या फ़र्क पड़ने वाला है और शिफ्टिंग ऑफ टुवर्ड्स राइट क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इन दोनों प्रॉब्लम्स में आपको एक तरह का उदाहरण बन जाएगा. तो दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे. सो इसको ध्यान से ये कर लो. इफ वंस अगेन आई रिपीट, इस 0 कैंसिल करना है तो इस डेसिमल पॉइंट, लेट अस अज्यूम दैट दिस डेसिमल पॉइंट
so we are going to shift it to left. If you shift it to left, you are going to add, cancel on 0. If you are going to shift it to the right, we are going to. So note, that is 709 by, I'll write 10. Okay, I'll write like this, 70.9 to 10. अगर to eliminate 0 from the denominator, shift the decimal point to the left of the whole number. That is 70.9 divided by 10. So if you want to cancel this, shift it towards left, that becomes what? 7.09. ये याद रख लो, भूलोगे नहीं. अब प्रॉब्लम ये बनता है, I love this. अब ये पूछेंगे, सर आपने तो 70.9 लिखा है, अगर आपके पास डेसिमल ही हो, उसके नीचे एक पॉइंट है, जैसा कि यू हैव 0.6 by 10, तब क्या करोगे? है ना? अगर इधर शिफ्ट करोगे क्या हो गया? तो ये भी यही बनता है. तो क्या है मतलब? Whatever it is, you are going to, now 0.6 by 10, you want to cancel this. So what you are going to do is shift it towards left. So ये बन जाएगा 0.06. 0.6 जाकर 0.06 बन जाएगा. So 0.06, if you want to shift to 0.1 means you used what to do. If you want to shift to this 1, if you shift one place, that is you will add 1 0. What is this? 0.6. You got back 0.6, है ना? Or 0.06 by 1, you want to shift 2 places, 2 zeros, that becomes 6 by 100. अगर इन दोनों जीरो को शिफ्ट करना है तो आपको 2 places, 0.2 places, इधर एक पॉइंट रहेगा 1 2. इनको अगर आप इसको अच्छी तरह समझ जाओगे, इफ यू रिमेंबर दिस वेरी वेल, इफ यू अंडरस्टैंड दिस वेल, यू विल नेवर गो रॉन्ग इन डेसिमल्स व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन डेसिमल्स. अगर ये नहीं सीखोगे, डेसिमल्स, ब्रैकेट्स, फ्रैक्शंस, ये बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स. बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, स्ट्रेट अवे मैथ्स बन जाते हैं. बगैर फाउंडेशन के आप घर नहीं बना पाओगे. अगर बनाओगे भी, जैसे कि ज़मीन पर अगर आप लोग बगैर फाउंडेशन के घर बना दोगे, एक हवा का झोंका आया, उड़ गया, है ना? अगर आपका घर मजबूत रहना है तो आपको फाउंडेशन बनाना है. उसी तरह अगर मैथ्स में कमज़ोर हो, स्ट्रांग बनना चाहते हो, तब आपके लिए फाउंडेशन ज़रूरी है. फाउंडेशन बनाओ. ये फाउंडेशन मैं आपके लिए डाल रहा हूँ. सो डियर स्टूडेंट्स, ये फाउंडेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप, दोबारा कहता हूँ, ब्रैकेट्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, ये अगर आप बहुत स्ट्रांग बन गए ना, आप डेफिनेटली मैथ्स में कमज़ोर नहीं बनोगे, अक्लमंद हो जाओगे, तेनाली रामा की तरह, बीरबल की तरह. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट decimal places, converting decimals into conversion. I'll take few more examples, 2 or 3 examples, and we'll go from fractions to decimals. Now decimals to fractions.
Now we'll take okay, याद रहो और डेसिमल के पास you have 1 and the 0 has no value because it is nothing but this is not approximate, it is equals to, this is nothing but it is equals to 1.321 because 0 has no value on the left side because instead of writing 0, 1 point here this 0 has no value, this becomes 1.321. So as usual write on this or write one below this, डिनोमिनेटर में 1 डाल दो और 3 शिफ्ट कर रहे हो 3 प्लेसेस 1 2 3 तो 1 2 3 0 बन गया तो क्या हो गया 1321 बाई 1000 ये रहा आपका फ्रैक्शन ये यहाँ पे कटता नहीं इसलिए ऐसा ही छोड़ दो दिस इज योर आंसर तो ये रहा डेसिमल प्लेस आपका सो विल थिंक अबाउट 0.0102 so as usual what I'll do I'll put 1 इधर आपको 4 1 2 3 4 so 1 2 3 4 0 डालना है तो ये क्या बन गया 0 0 1 0 2 by 10,000 सी दो यहाँ पे 0 का मतलब बनता है मगर यहाँ नहीं बनता क्योंकि ये 0 बिफोर दिस हैज नो वैल्यू तो ये क्या बन गया दिस बिकम्स 102 by 1 2 3 4 zeros तो कैंसिल होता है यहाँ पे दैट इज 2 5s are 51s are 2 5s are 3 zeros so that is nothing but 51 by 5000 ये रहा आपका आंसर लुक एट दिस प्रॉब्लम दो यू शिफ्टेड पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद एक 0 है ना वी हैव 1 0 हियर so you now it is counted because after decimal shifting this so it becomes 1 0 is this 0 1 0 2 so now this 0 so whole number के लेफ्ट साइड पे जितना भी 0 है नो वैल्यू तो जिसमें 102 बाई समझ लीजिए इतना अगर आ गया आपको तो कोई भी डेसिमल प्रॉब्लम दे आपको आप आसानी से डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करोगे नाउ आफ्टर दिस वी लर्न फ्रॉम टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स थोड़ी देर में सब्र कीजिए इंतहा हो गई इंतजार की है ना मत इंतजार कीजिए हम आएंगे से आना है आपको decimal to fractions fraction to decimal equally you have to learn both it should be equally good because they are all interdependent so आपको दोनों को prepare करना है so I'll teach you let us take a simple example that is we have 1/4 अब 1/4 को decimal में convert करना है तो ये क्या करेंगे we'll take 1 divided by it means this is your numerator and denominator so divide the numerator by the denominator first step is what divide the numerator by the denominator so you take 4 you can't divide 1 by 4 so what I'll do I'll write on 0 and I write on point here once you write a decimal you are entitled to use 1 0 there okay so what happens you can divide 4 1s are 4 2s are so 4 2s are 8 so what happens here you get 2 minus this
10 minus 8 is 2. Since you already taken a point here, you can add one more 0. So 4 goes there 5 times. 4 into 5, that is 20. So the remainder is 0. So divide until you get 0, 0. इसको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है, 4 से भाग करना है, तो 10 को नहीं जाता है. So I'll explain to you once again in Hindi. 4, 1 divided by 4. आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको क्या करना है? एक 0 डालने के लिए फर्स्ट आपको एक 0 डाल के एक पॉइंट डालना पड़ेगा. सो एक बार पॉइंट डालने पर, डेसिमल पॉइंट डालने पर इधर 0 डाल लो, तो आ गया ना. तो इस भाग कितने पे होगा? दैट इज 2 ज़ा 8. सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या हो गया? 2 बचा 2. तो आपने डेसिमल लिया है तो और एक 0 ले सकते हो, मगर एग्जाम में नहीं, सिर्फ यहाँ. एग्जाम में 0 लोगे तो पढ़ा के फायदा नहीं. तो इधर 0 डालो, तो कितने बार जाएगा? 5 बार. 4 5 ज़ा 20. सो 0 0. सो हियर आपको क्या सीखना है? सो दिस इज quotient, divisor and this is remainder. जितना रिमाइंड होता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं. सो कितना रिमाइंड हो गया? तो इधर 0 0. सो आगे मैं पढ़ाऊँगा. मैंने कहा है ना, आप मेरे साथ से जुड़े हो, 7th स्टैंडर्ड से 7वीं कक्षा से जुड़े हो. मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें. कब तक? जब तक आपका हायर स्टडीज़ कंप्लीट ना हो, तब तक आप मेरे साथ जुड़ो. उसके बाद दोस्तों की तरह जाएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं. इसके लिए आपको क्या करना है? सब्सक्राइब बटन पे फौरन हाथ उंगली दबाना है और बेल बटन को भी प्रेस करना है. ऐसा करने से क्या होगा? मैं हमेशा आपके साथ लिंक हो जाऊंगा. मैं जहाँ भी रहूँ, आप जहाँ भी रहो, ऑटोमेटिकली मेरा YouTube में जब भी पोस्ट करता हूँ आपको मिल जाएगा. सो इन ऑर्डर टू सी दैट वी आर टुगेदर until I am alive, definitely we can, provided you subscribe, you press the subscribe button, you subscribe my channel and press the bell button. The moment you do that, we are linked forever. So wherever you are, wherever I am, you will continuously get my videos whenever I post it on YouTube. So that is very important. सब्सक्रिप्शन करने से आप पैसा नहीं घटेगा, आपका पैसा नहीं जाएगा, मगर हमारा रिलेशनशिप बढ़ेगा. हम हमेशा साथ में रहेंगे. हम साथ रहेंगे ना, तो इसके लिए आपको फ़ौरन सब्सक्रिप्शन बटन दबाओ, बेल बटन दबाओ. और अपने दोस्तों से भी कहो जो गणित में वीक हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए बोलो अगर स्ट्रांग बनना चाहते हो तो फ़ौरन सर के मैथ्स एंड बेसिक्स फॉर यू उस चैनल को जाओ. प्रेस सब्सक्रिप्शन बटन एंड बेल बटन करने से वो भी हम सब लोग जुड़ जाएंगे. ये करना ज़रूरी है, आपको करना ही पड़ेगा. ओके, लेट्स गो. सो आप सब लोग जानते हैं किस तरह माँ कहती है, बेटा जाके क्वार्टर लीटर दूध लेके आ जाओ. सो क्वार्टर लीटर दूध इज हाउ मच? 0.25, that is 250 ml. 250 ml. So this conversion from liters to milliliters and all the things we learn later on. But now let us not deviate from our subject. हम अपना क्या बोलते हैं वो जो राह पे चलें उसी पे चलेंगे. फिलहाल हम डेसिमल टू फ्रैक्शंस टू डेसिमल कर रहे हैं, उसको निभाएंगे. सो वन प्रॉब्लम. सो 1/4 is equals to how much? Equals to 0.25. First case. This is number 1. I'll give practical examples. उदाहरण जो दूंगा हमेशा हमारे बीच ही रहेगा. वो सेकेंड वन 1/2 लीटर है ना.
तो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ 250 ml. अगर मैं कहूँ क्वार्टर लीटर मिल्क, दिस इज नथिंग बट 250 ml ऑफ मिल्क. आपको याद रही इसलिए लिख रहा हूं मैं, वरना इसकी जरूरत नहीं लिखने की. सो 250 ml, क्वार्टर लीटर मीन्स 0.25 मीन्स 250 ml. अगर 1 लीटर का रहा तो ये क्या मतलब, 1/4 का मतलब क्या, 1 लीटर 1 लीटर ऑफ मिल्क, इसको 4 लोगों पे बांट रहे हो, रामू, श्यामू, भीमू और कोई, उन 4 हिस्सों में अगर बांट रहे हो तो सबको कितना मिलेगा, 4 में 1 लीटर में कितना मिलेगा, 1000 ml. 1000 ml रहेगा 1 लीटर के अंदर. अगर इसमें 4 में डिवाइड करो तो कितना आएगा, 250 ml. दैट्स व्हाट आई थॉट यू हियर. ओके, सो आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कहाँ पर इस्तेमाल, क्यों इस्तेमाल होता है. सो दिस इज व्हाट we are dividing 1 by 2. सेम प्रोसेस. 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो शुरुआत में एक 0 डालो, 0 डाल दिया, एक डेसिमल पॉइंट डालो. द मोमेंट यू पुट ए डेसिमल पॉइंट यू आर एंटाइटल्ड टू पुट ए 0 हियर. तो कितने बार जाएगा ये, 2 5 10. सो 2 5 10, 2 5 10 माइनस 0 0. जब तक 0 0 नहीं आएगा तब तक आपको डिवाइड करते ही रहना है. इस भाग को क्या बोलते हैं, कोशेंट. QUOTIENT, कोशेंट बोलते हैं. इस भाग को डिवाइजर, जिसको रिमाइंडर. सो इन चीजों को फिलहाल आपकी जरूरत नहीं. सो दिस इज 0.5 इक्वल्स टू 500 ml ऑफ मिल्क. ये लिखना जरूरी नहीं, फिर भी बता रहा हूं. 0.5, हाफ इज 0.5. सो इसको मिटा दूंगा. नेक्स्ट 1.3, 1 डिवाइडेड बाई 3. इसको क्या करेंगे, आई नो द आंसर बट 1 से डिवाइड करो. ओके, तो क्या हो गया, नहीं जाएगा. एक अंडा डालो, 0 डालो, तो एक 0 डालो, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा. 3, सो दैट इज 9. सो माइनस 1 बनेगा. सो अगेन सिंस आफ्टर a decimal you have put 1 more 0. सो और 3 और 9 बनेगा, एक और एक 0 और 3 एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस. सो शुक्र है 0.33 पे खड़ा दो. मैंने बताया था आई टीच ऑल द थिंग्स लिटिल लेटर. सो अगर ये 1000th प्लेस दैट इज 0.333 है, अगर 0.336 होता तो एग्जाम में बोलता चेंज इट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो इधर क्या करना है, इसको हटा के ये इसको ऐड करना पड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा, 0.34 हो जाएगा. ये आगे सीखेंगे, सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखने के लिए बोल रहा हूँ. तो ये आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है, इसको हटा देंगे, जस्ट आपकी जानकारी के लिए बताया था. सो नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल विल टेक 4th on 3 divided by 4. So we'll take 3 by 4. That is 3 divided by 4. So नहीं जाएगा, एक 0 डेसिमल पॉइंट, एक 0 ऐड करो तो कितना है
हाँ 4 7s are 28, so 2, एक 0 ऐड करो because you have decimal place, 4 goes to 5 times, so that is 20, that becomes 0 0. So this becomes how much? 1 by 3 is 0.333 etc. That is 333 ml of मिल्क. तो मैं इसको ठीक से नहीं लिखा, एडजस्ट कर लो, मुझे ज़रूरी था ये जस्ट ऐसा लिख दिया हूँ. ये 3/4, दिस इज नथिंग बट 0.75. 3/4 इज पौना लीटर. पौना लीटर इज 0.75. So this is nothing but 750 ml of milk. If I write this, you will remember, that's the reason I am writing this milk in the thing, 250 ml, 500 ml, 333 ml, 750 ml, because I wanted to make you understand. But otherwise, this was more than enough. Otherwise, I can definitely stop at this. Okay, so you have learned how to convert decimals to fractions and fractions to decimal. Only thing you should know, division. We'll take 2 more cases and wind up this. और एक 2 cases लेंगे. Fifth problem. 5 divided by 6. Okay. So if I ask you what is the value of this, you will not be knowing. If in the event if I bring it in the form of decimal, आपको पता लग जाएगा. So I'll write 6. So 5 को 6 से नहीं डिवाइड कर पाओगे, इसलिए एक 0 डालो, एक पॉइंट डालो. So एक 0. हाँ कितना? 6 8s are 48. तो कितना है? -2 आ गए. Since this put on 0. 6 3s are 18. Again 2 0. So this becomes what? 0.833 and so on. So you can stop at this equals approximately equals to 0.83. Okay. For 2 decimal place I have corrected. If it was more than 5, the 1000th place, if this was more than 5, I would have made it 0.84. Since it is less than 5, make it 0.83. कहने का तात्पर्य ये है, अगर ये होता 0.836, instead of this 3, if I had 6, that is 0.836, what I have done? I would have done this as 0.8. 8 को काट के इसको 1 ऐड कर देता, तो ये करने ये रहता 8.4. ये आगे पढ़ोगे, when you come to 8th or 9th standard, you will learn this. So at present you should be happy with this. Okay, don't do this because it is not in your syllabus. So they say correct it to 2 decimal places, 3 decimal places, or 1 decimal place, and such cases you are going to, when it is more than or it's greater than or equals to 5, then you remove it and put 1. अगर आप भी करोगे तो एग्जाम में खुश होगा, शाबाशी देगा. And last case, for this we'll take one more last case. 6 3 divided by 8. Whatever value you can write it. So what happens here? 3 8s. I write one 0 point. So 8. I'll write this 0. 8 3s are 24. तो 6 आएगा. Since I have taken 0 decimal, I have taken second head. 8 8 8s are 64. 8 7s are
56 minus again 4. So you get a 8 5s are 40. So this becomes what? 0.375. In this case, the last place is equals to or greater than 5. It should be more than 5 or equals to 5. You can write this as 0.38. You remove 1 and plus 1 here. When it is equals to or greater than 5. Remove 1 from this, add to this 100s place and make it 38. So this is allowed. So आपने कन्वर्शन सीख लिया. नेक्स्ट अब जाएंगे व्हाट नेक्स्ट स्टेप. एडिशन ऑफ डेसिमल्स. Okay, you have to add decimals. Now, first case, add 3.68 to 2.17. Simple. We'll start with simple level. So आपको क्या करना है? 3.68 लिखो. 2 पॉइंट की जगह 0.17 लिखो and simple addition. So 8 plus 5 15. So this is 8 plus 5.85 is the answer. Second case, we'll take 9.013 plus 1. I'll write 0.0037. तो को क्या करना है? जहाँ भी पॉइंट है, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? 9.013 प्लस पॉइंट की जगह आने दो 1 0 और 1 0 1 3 1 7. तो पॉइंट के बाद 0 डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर सेफ्टी साइड यू पुट 1 0 here. So the value is same. After decimal place, how many zeros you want to add? I told you this. So this is add 7 6 1 0 9. So dear students, बच्चों, आपके लिए मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम चुन चुका हूँ, मैं थ्रेड कर चुका हूँ. इन चीज़ों को हम ऐड करके दिखाएंगे. अगर ये ऐड कर पाओगे तो आप addition of decimals सीख लिया है. So I have selected few examples for you. So let's add these examples. In the event if you can add it without any difficulties, it means to say that you have learned addition of decimals correctly. So let's take one by one. I'll take problem number. In that case, its next problem is add what? 37.64 and 7.03. So here इधर decimal place को choose करना बहुत important चीज़ है. If you are happy with, if you can comfortably place the decimal place one below the other, your problem is solved. Now let us take, that is, I'll write 37.64. Now decimal place है, write the easiest way, decimal place लिख दो, fix a decimal one below the other, so automatically you will have 0 and 3 here, and this 7 will come here without any difficulty. Put the decimal point immediately below that, whatever the digits, don't worry. The moment you do that, your problem is solved. Okay, now just add it. So this is addition. 4 plus 3 is 7, 6 plus 0 is 6, minus
7 plus 7 is 14, 1 carrier, this 3 plus 1 is 4. So answer is 44.67. So you got the answer. This is your answer. Now second problem. 9.261 and 4.3. 4.3. What I'll do? I'll first write 9.261. I write this decimal place immediately below that. So 3, I write 3 here, and this 4 right here, and remaining you start putting zeros. So after the decimal place, whatever zeros you put, it has no value. So this is 1, 6. If you add 1 plus 0 is 1, 6 plus 0 is 6, 2 plus 3 is 5, 9 plus 4 is 13. The answer is this. So you put the decimal place. You to ignore this. What are the numbers you have, right and left? Ignore it. Put the decimal place one below the other. Enough for you. So let them give you any values. I have taken that. So your answer will be right. So I'll rub this. Make a note of that. Third problem, you have to add 8.631. For that you have to add 4.9. So I told you, put that point, put that 4 and 9 here and 2 zeros, done. Then 5.05 again, put here 5.05 and put on 0, add it. So 1, 3 plus 5 is 8, 6 plus 9 is 15, carry of 1, 9 plus this is 5, 9 plus 4 is 13, 13 plus 8 is 13 plus 3, 5 is 18. So easiest way what I'll do, I'll put this 1 to this 4, it becomes 5, 5 plus 5 is 10, 10 plus 8 is 18. So whenever you get this opportunity, you add this 1 to this 4, it becomes 5, 5 plus 5 is 10, 10 plus 8 is 18. So this is your answer. So I'll rub this and I'll take this value. So this is your, I'll take next, add. So this is third, add. That is, I'll write first what? So in such case what you do, you take the values higher. Here you have 3 whole numbers, 122. First write that, you will not go wrong. So first write the higher value, 122.102. Now this becomes easy. The moment you write highest value first, your answer is solved. Because if you write this and try to get confused, no, I'll show you that also. So next highest value is 31.8. So you write that point here, you write that 8 here, and 31 1, and this is 800. Now next is highest value 9. So put that dot here, 9090. Okay. Now 7. So point, you put that point 060, and this is 7. You have to add all this. So this is 2 plus 0 is 2. So 0 plus 0, 9 plus 6 is 15. Carry of 1. 2 plus 8 is 10. I'll carry it 1. 2 plus 1. 2 plus 1, 3. 3, 4. 4 plus 9 is 13. 13 plus 7, 20. 0 carry of 2. 2 plus 2 is 4. 4 plus 7, 7. And this is 170. Let's recheck it. 2. Whenever you have done a problem, please recheck it once again. Possibilities are there, even I may go wrong. So better to check it once. So 2, 9 plus 6, 15, 1 year, 2, 10, 0 carry of 1, 3, 4,
13, 20, 0 carry of 2, 2, 4, 7, 7, 1. See what I will do in this case? 2 plus 1 is 3, 3 plus 7 is 10, 10 plus 10, 9 plus 1, 10 plus is 22. That's all, but your kids don't do that. So 3, 4, 13, 20, 0, 2. So this answer is right. This is how you have to do addition. I have taught you how to fix the decimal places one below the other. The moment you do it, whatever value they give him, don't worry. You say, you're right यार, मैं आपका जवाब दूंगा, जो भी कर लिखोगे मैं आपका जवाब दूंगा. कभी कभी कहते हो ना, अरे मैं तो एक हाथ देख लूँगा, तो तुम प्रॉब्लम लिखो, मैं एक हाथ देख लूँगा, करूँगा. That attitude, positive attitude. Okay, so you have learned addition. Let's nothing more on this. So I'll go for subtraction. Now, subtraction. Of decimals. Subtraction of decimals. Now we'll take this first case only. Subtract 7.03 from this. So we'll take first case. Subtract 7.03 from 37.64. So what we'll do? First write 37.64 minus. So here point, add karo a point. So you have 0, 3 and this 7 here. Right? So you have to fix this decimal place properly one below the other. The moment you do that, easy. So 4 minus 3 is 1, 6 minus 0 is 6, 7 minus 7 is 0. This is 30.61 is the answer. मिटा दूं प्रॉब्लम को. I'll rub this. Next, subtract 4.3 from 9.261. So first write 9.261 subtract. So point, you put that point. So 3 will come here and 4 will come here. So write 2 zeros after that. No problem. 1 minus 0 is 1. 6 minus 0 is 6. 2 minus 3 you can't. So what you'll do? You borrow 1. एक उधार दो यार, एक नंबर उधार दो. सो 9 में से एक इसको उधार दो तो ये क्या हो जाएगा? 12 बन जाएगा. 12 में से 3 निकलोगे 9 बन जाएगा. तो बचा कितना? 1 चला गया ना, तो ये 8 हो गया. 8 में से 4 गया तो 4. Got it? So how we have to do? I'll teach you once again. 9.261 minus 4.3, add 2 zeros, no use, no value for these zeros after the decimal places. Don't add here 0. If you add here 4.03, gone. You also gone, problem is gone. So after that 3 you can add. So now 1 minus 0 is 1, 6 minus 0 is 6. Now here you can't. What you do? You ask him, here, lend me one number here, 1 mark here, 1 point here. So what this fellow will do, Papa, he'll give 1 point and he'll make it 12. 12 to get 3, definitely 9. Now
So 8 1 has already gone. Instead of 8 it is 9. Instead of 9 it is 8. 8 minus 4 is 4. So if you want to cross check, you add this C and both. That is to cross check. To cross check. Cross check. So there is no. So in Christianity it is cross means cross check. But don't write this only. हम लोग मजाक में लिख रहे हैं, मगर एग्जाम में मत लिखो. एग्जाम ये पूछे क्या प्लस चेक लिखा है. जो अगर आप इसको क्रॉस चेक बोलोगे भी तो क्या करेगा वो प्लस चेक. व्हाट इज प्लस चेक? ढूंढते रह जाएगा वो. तो इस दोनों को लो. दैट इज 4.300 प्लस 4.961. इन दोनों को ऐड करो. 0 plus 1, 0 plus 6 is 6, 3 plus 9 is 12, carry of 1, 5 plus 4 is 9. You got back the answer 9.261. ये क्रॉस चेक. इन दोनों को ऐड करो, ये आना ही पड़ेगा इसको. अगर ये नहीं आया तो समथिंग रॉन्ग. तो चेक कर लो. इफ समथिंग गोज रॉन्ग प्लीज चेक इट. इफ देयर इज सम डिफरेंस यू हैव गॉन रॉन्ग. सो ये आ गया. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से इसको निकालेंगे. ओके. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम. ऐड 122.102 and 9.09 and subtract 31.8 and 7.06. ओके. तो इन दोनों को हम पहले ऐड करेंगे. 122.102 इसको 9.09 ऐड करना है. कैसा करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को पहले लिख देंगे. ऐसा डेसिमल पॉइंट, ये गलती नहीं होगा. ऐसा करोगे कभी गलत नहीं जाओगे. सो बचा क्या इसके बाद 9, राइट. इसके बाद 09. चाहे तो एक 0 डाल लो, गलत हो, विल नॉट गो रॉन्ग. यू पुट ए 0 बिकॉज आफ्टर डेसिमल इफ यू पुट ए 0 it has no value. It remains value remains unchanged. So इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो गया 291. This is 9 plus 2 is 11. Carry of 1 3 1. This is your 131. Now we will add this 2. That is now 31.8 plus 7.06. So point और ऐड करो पॉइंट. सो 7 इसके नीचे आएगा. सो 0 6 0 and 6. सो डेसिमल कितना हेल्प करेगा देखो. पॉइंट अगर एक के नीचे डाल दोगे सब कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए. तो एक 0 डाल लो, ऐड करो 6 8. दिस इज 38. सो इसको इससे निकालो. अब व्हाट आई हैव सेड, add this 2, from this you remove this. That's what I have told you. So now मिटा दूं. Yes. So that is 131.192 minus, again I'll put a decimal point here, 38 I'll write here and 86 I'll write here and 0 I'll add, so that it will not go wrong. 2 minus 0 is 2, 9 minus 6 is 3. So 1 minus 8 you go to, you remove 1 from here and add, so it becomes 11 and this becomes 10. Okay. So 11 take away 8 is 3. So now since you have removed here, it becomes 0 here, isn't it? So you can't remove this 0. So what you will do, you take 1 from this and make it 10, isn't it? 10 take away 8 is 2.
Since you have given remove this becomes 2. So this one you add here, 12 plus 3 is 12 minus 3 is 9. समझ में आया? I'll teach you once again. थोड़ा बड़ा वाला लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए. 139.192, थोड़ा बड़ा लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए. इसके अंदर 38.860 माइनस करना है आपको, है ना? ये आसान से कर दोगे. 2 minus 0 is 2. 9 minus 6 is 3. Now 1 minus 8 you can't, so you have to borrow 1. एक उधार दो ना यार, तो इसने उधार दे दिया, तो एक उधार दे दिया इसने, तो ये क्या हो गया? तो एक उधार एक पॉइंट दे दिया, तो ये बन गया 11. 11 minus 8 3, है ना? जब ये उधार दे दिया तो एक इसके पास कम हो गया, तो ये क्या हो गया? 8 हो गया, है ना? यहाँ मैंने गलती किया है. ओके, सो देखो कभी कभी गलती हो जाती है, ऐसा सुधार लो. सो एक दे दिया आपने 139 से, 131 है ये, सॉरी देखा, सॉरी दिस इज 131. 131.192 माइनस 38.860. मैं बड़ा लिखा हूँ इसलिए अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको समझाना है ना, इसलिए थोड़ा सा जूम किया है मैंने इसको. तो 2 minus 0 is 2. 9 minus 6 is 3. अच्छा नहीं लग रहा है. So that is 2, 3. Now 1 minus 8 can't. So ये किससे उधार लोगे? एक उधार, तो ये क्या बन गया आपका 11. 11 minus 8 is again 3. जब इसने उधार दे दिया तो ये क्या बन गया? तो ये बन गया 0. ये कट गया, ये 0 बन गया, क्योंकि एक था ना वो दे दिया आपने. तो अब 0 में से 8 नहीं निकाल पाओगे, तो आप क्या करोगे? आजू बाजू में पूछोगे, तो इससे पूछोगे यार एक नंबर दे दो यार, तो ये क्या करेगा? एक नंबर इसको देगा, तो ये क्या बन गया? 10 बन गया. 10 में से 8 निकालना है, तो ये कितना बन गया? 2. तो इसने 1 दे दिया, तो ये बचा कितना? ये 3 में से 1 चला गया था 2. 2 में से अब 3 निकालना है, नहीं जाएगा, तो इससे उधार लोगे तुम, तो ये बन गया 12. 12 minus 3, 12 minus 3 is 9. 92, 332, करेक्ट. सो क्रॉस चेक करना है, तो इन दोनों को ऐड करो. देखो, दैट इज क्रॉस चेक, दैट इज 92.332 प्लस 38.860. ऐड करो. 2 plus 0 is 2. This is 9. 3 plus 8 is 11. You'll carry 1. 2 plus 8 is 10. 10 plus 1 is 11. You will put here 1. 10 plus 3 is 13. कितना चाहिए था मैं? 131.192. 131.192. मैंने 131.192 बोला, याद रखना. 131.192 नहीं बोला, यही है फ़र्क है. जब आप भी पढ़ लिख कर जब टाई बूट सूट डालोगे ना, तब ये सब आपको खुद ब खुद आ जाएगा. क्यों मालूम? अगर फ़र्ज़ करो एक मीटिंग में बैठे हो, एक अध्यापक हो या कुछ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, आप अगर गलती से 131.192 बोल दिया, सब लोग हंस पड़ेंगे आपके ऊपर. अरे क्या यार लेक्चर कितना पता नहीं, डेसिमल कैसे बोलते हैं? 131.192 बोलते हैं. ये तो साला 131.192 बोल रहा है, इसको आता ही नहीं मैथमेटिक्स. ऐसा सुनना चाहते हो? बिल्कुल नहीं सर, क्यों सुनेंगे? हम भी अच्छा बनेंगे आपकी तरह, है ना? ठीक है, तो 131.192 ऐसा बोलना है. ओके, डन. सो सब्ट्रैक्शन विल टेक वन मोर. आपने बहुत कुछ सीख लिया है, तो विल गो फॉर सम अदर प्रॉब्लम्स. नाउ
बच्चों अब हम 4 प्रॉब्लम करेंगे एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स खलास. विल गो फॉर एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, विल गो फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सो ये 4 प्रॉब्लम ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से करिए. सो विल टेक दिस. व्हाट यू वांट्स? Subtract 5.89 from 8.654. We'll take one by one. Problem 1, that is 8.654 minus point. लिख दो point. So इधर 5, 8 and 9 and put on 0 here. Okay. So now 4 minus 0 is what? 4. Now you can't deduct 9 out of 9 from 5. So what I'll do? I'll borrow one number here and this becomes 15. 15 take away 9 is 6. So what had happened to this? Since he has already given you one number, so this number becomes 5, isn't it? One he has already given, so this becomes 5. So now 5 take from 5 take away 8. You can't. What you'll do? You borrow one number from here, so that becomes 15. So 15 minus 8 is 7. So he has already given you, so this becomes 7, isn't it? One you have already given to him. So this 7 minus 5 is 2. This is your answer. So to cross check it, you add, and if you add this to ENI, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, अगर ये जवाब मिल गया तो प्रॉब्लम करेक्ट है. तो ऐड करेंगे, दैट इज 5.890 प्लस 2.764, सॉरी 764. तो क्या होगा? 0 plus 4 is 4, 9 plus 6 15, carry of 1, 8 8 16, carry of 1 8, 8654, 8.654, 8.654. तो हमारा प्रॉब्लम जो किया आपने ठीक है. सो जब भी प्रॉब्लम करते हो एग्जाम्स के अंदर, ये करने के बाद एक बार क्रॉस चेक करो. ये क्रॉस चेक करने में इंस्टेड ऑफ डूइंग वंस क्रॉस ऐसा कर दो तो आ गए आपको. सो ये प्रॉब्लम हमने कर चुके. सो दिस प्रॉब्लम इज ओवर. सो प्लीज मेक ए नोट ऑफ दैट. यस स्टूडेंट्स, आई लव दिस. हाँ सर, मिटा दो सर. सो अब ये प्रॉब्लम लेंगे, सेकेंड प्रॉब्लम, दैट इज 27.06 माइनस पॉइंट. फर्स्ट आई राइट दिस पॉइंट. मुझे तो आसानी में कर दूंगा, मगर आपके लिए ये करूंगा. सो लेफ्ट साइड पे 14 and this is 38. okay, माइनस करना है 6 minus 8. so इससे एक उधार लोगे तो इसके पास ऑलरेडी 0 है, कहाँ से देगा आपको? अरे यार उधार पूछ रहे हो, मेरे पास ही पैसे, जेब में पैसे नहीं. तो आप कहोगे तेरे पास पैसे नहीं तो तेरे दोस्त के पास से मांग के दो ना. तो क्या करेगा ये? इसको उठा के देगा. तो ये क्या हो गया? 10 बन गया, है ना. तो ये क्या करेगा? जब उधार मिल गया तो ये इसको देगा. तो ये क्या गया? 16 बन गया. तो 16 में से 8 is 8. इसने उधार एक दे दिया है दोस्त के पास मांग के. तो 10 में से एक दे दिया तो बचा कितना इसके पास? 9. 9 minus 3 कितना? 6. 9 minus 3 is 6. अब ये भाई साहब ने इसको उधार दे दिया. अरे मैंने उसके पास कुछ नहीं था, मैंने उसको उधार दिया, मेरे पास पैसे कैसा आएगा? तो सोचते रहेगा. तो ये 7 है. सो एक देगा तो कितना बच गया इसके पास? तो बचा 6. सो 6 minus 4 कितना? 2. 2 minus 1 is 1. So this is your answer. Cross check. Cross check. That is 14.38 plus 12.68. 8 plus 8 is 16. 1. 4 plus 6 is 0. 10.
So this is 5 plus 2 is 7 and this is 27.06. 27.06 आ गया तो प्रॉब्लम करेक्ट. सो ये साहब भी खुश हुआ, मुगाम्बो खुश हुआ. तो इसको मिटा दो. इसको लेंगे 109.041 माइनस 91.32. तो फर्स्ट इसको लिख दो इस भाई साहब को 109.041 माइनस, मैं डेसिमल प्लेस पहले डाल दूंगा, किसका ही परवाह नहीं करूंगा. तो इसके बाद बचा 32. तो इधर क्या है 91. फिक्स किया आपने 109. सो डेसिमल प्लेस डेसिमल के नीचे आ गया तो 30.32 आ गया. लेफ्ट साइड का 91 डाल दिया. तो माइनस करो डायरेक्टली. सो इधर हाँ एक 0 डाल लो. ओके, don't try to remove one out of this. You put a 0. This is where you go wrong. Most of you go wrong because there is nothing here. So what you will do, you straight away write something 1 1 0 0 1. No, put a 0 here. So what happens here? 1 minus 0 is 1. 4 minus 2 is 2. Right? So now you have nothing. भाई साहब एक दे दो यार, भिक्षान देवी. तो इसने एक दे दिया, तरस खा के ले ले. सो 10 minus 3 is 7. तो जब इसने एक दे दिया तो बचा कितना इसके पास 8. 8 minus 1 is 7. Now इसके पास कुछ नहीं तो ये इसको एक दे दिया तो ये बन गया 10 minus 9 is 1. So cross check क्या बोलता है? क्रॉस चेक 91.320 17.721 1 0 plus 1 is 1 2 plus 2 is 4 3 plus 7 is 10 carry of 1 this is 9 plus 1 is 10 109.041. तो ये भी साला बच गया. सो सीख गए, इतना ही है ये डेसिमल का खेल भाई साहब. सब कुछ बोलते हैं ये सर्कस है भाई साहब, सर्कस. ये भी सर्कस ही है, लाइफ का सर्कस. सो इसको मिटा दो, मिटा भी दिया, हटा भी दिया. अब लास्ट प्रॉब्लम करेंगे सब्ट्रैक्शन पर. सो 33.7 से 24.84 हटा दो, मिटा दो. सो दिस इज 33.7. तो मैं क्या करूंगा इसके बाद, सिंस आई हैव 2 decimal places here, I'll add on 0 here. डेसिमल प्लेस 2 है, इधर 1 है, तो एक 0 ऐड कर लो ना, क्या फर्क पड़ने वाला है. 0.7 के बाद कितना भी 0 ऐड करो आपका ही है. तो 24. सो डेसिमल फिक्स कर लो. सो ऑन द राइट साइड 84 एंड दिस इज 24. सो एक इधर क्या हो गया, 10 में से 4 जाना है, नहीं जाएगा तो ये उधार देगा एक इसको. तो ये कितना बन गया, 10 बन गया. 10 minus 4 6. तो इसने एक उधार दिया है तो इसके पास कितना था तब 6. एक तो दे दिया ना इसने, तब 6. तो 6 में से 8 निकालना है, वो भी नहीं जाएगा. तब ये एक इसको उधार देगा तो ये कितना 16 बन गया. 16 में से 8. तो ये कितना बचा, ये बचा 2. 2 एक दे दिया ना उसने, अब 2 में से 4 निकालना, वो भी नहीं लेगा तो ये भी एक लेगा उधर. तो 12 में से 4 निकालना है तो कितना हो गया 8. सो 2 एक दे दिया इसको तो ये बचा 2. 2 minus 2 is 0. राइट, क्रॉस चेक.
ये लिख रहा हूँ इसलिए कि आपको एग्जामिनेशन में याद आ जाए। सर ने लिखा था शॉर्टकट क्रॉस चेक, तो आपको भी ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस बन जाएगा, इसलिए लिख रहा हूँ। कभी कभी मारने से ज़्यादा कहना, देखो कभी कभी ऐसा होता है, लड़ते हो आप लोग, वो आपको एक मारा, आपने उसको मारा, बहुत दिन के बाद भूल जाओगे, मगर उसने एक गाली दी और आप एक गाली दी तो जिंदगी भर रह जाएगी याद, है ना। रे उसने ऐसा बोला था, मार तो याद नहीं रह जाएगी, बातें बन जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी। उसी तरह मैंने क्रॉस चेक लिखा है, ये दिमाग में बैठ जाएगा। जब भी आप हिसाब करोगे, सर ने बोला था क्रॉस चेक करेंगे। चलो इन दोनों को ऐड करेंगे, 24.84 प्लस 0.8.86 ऐड करो, 4 प्लस 6 10, एक ऐड करो, 9 प्लस 8 17 एक ऐड करो, 5 प्लस 8 13, कैरी ऑफ 1, 3 प्लस 2 1 प्लस 2 इज 3, 33.7 आ गया। दिस इज योर आंसर। सो आंसर इज हाउ मच, 8.86। तो ऐसा एग्जामिनेशन के बाद लिखने के बाद आंसर राइट हैंड पे लिख दो। मैं तो इन चीज़ों को लिखा नहीं, तो जो भी है वो लिख लो। ओके, कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। मैंने जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है वो उसको मैंने किया है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ऐसा ही बैठेगा। ये डेसिमल को एक के नीचे डाल दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, खुद ब खुद मिट जाएगा सर दर्द। सो we have done this. We'll go for multiplication of decimals. Now we shall learn multiplication and later we learn division of division of decimals. So dear students, this is also very simple. Only thing you need to play with your decimals. So if you know how to fix the decimals, your problem is over. So we'll start with simple example, that is, if you multiply decimal by 10, 100, 1000, what happens? The effect of 10, 100 and 1000 on decimals. We'll see that. Now, let's take example, that is multiplication of decimals. Now let us take an example 6.03. So in the previous case we had learned, for example, if we divide 1 by 10, we used to say that it is 0.1. Now in this case, if you multiply this 1 by 10, so 1, you are going to follow this with 1 0, isn't it? Look at the difference. Here you are dividing, it becomes a decimal. Here you are multiplying, it becomes a whole number. Supposing you multiply 1 by 100, it becomes 1 followed by 2 zeros. So likewise, and 1 by 1000, that is 1000, and so on. So likewise, when you multiply, अगर आप लोग एक डेसिमल को टेंस या 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा देखेंगे। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, आपको एक ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ के लिए, तो ये क्या बन जाता है, दिस बिकम्स व्हाट, 60.3. When you multiply 6.03 with 10, so you have to shift 1 point towards the right, that becomes 60.3. So it is a very simple way. Whenever अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर 10 या 100 या 1000 है, सिर्फ आपको जीरोस शिफ्ट करना पड़ेगा, ये आपको सीखना है। This is example 1. Example 2, 9.03 लेंगे।
सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाई 100. तो क्या होगा? दिस बिकम्स हियर, you have to shift this to one place and second place, that becomes what? 903.0, because after decimal 0 जितना भी लगाओ उसके वैल्यू नहीं है, और if you want you can write straight away 903. we'll take another, और एक एग्जाम्पल लेंगे. 16.15 into 10. तो यहाँ होल नंबर्स 2 डिजिट्स है एंड डेसिमल भी, decimal part also 2 digits. So what happens here? If you multiply this becomes 161.5, because you have shifted this towards right to one place. So by shifting it, this becomes 161.5. And likewise fourth, if you have 19.005, if you multiply this with thousands, okay, then what happens here? You have to shift, this is tens, hundreds and thousands, so you are going to shift 3 places here. So this becomes what? What happens to the 0? The 0 will be there. So 0, 0, 5. Cross check करना है. See this, 19,005 divided by 1000. So you have a decimal place here. So एक 0 तो इधर शिफ्ट होगा, और एक 0 इधर शिफ्ट होगा, और एक 0 इधर शिफ्ट होगा. तो ये क्या हो गया? 19.005. ये आ गया आपका 19.005. सो इसका मतलब है जब भी आप 10 या 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करोगे उतना डेसिमल प्लेसेस टुवर्ड्स राइट को शिफ्ट करना पड़ेगा. दिस इज द इफेक्ट ऑफ tens, hundreds and thousands on decimal places. Now what we have done, we have multiplied whole numbers, that is decimal thing, with tens, hundreds and thousands. अब देखेंगे अगर डेसिमल पॉइंट को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा. सो एनी मोर थिंग? ओके, वन मोर लास्ट केस. 5 0.007 into 100, right? So towards left you don't have any value, no problem. So आपको क्या करना है? 2 zeros, 2 0 शिफ्ट करना है, 2 places शिफ्ट करना है. तो ये क्या हो गया? 0.7 बन गया, क्योंकि ये पॉइंट डेसिमल प्लेस 1 प्लेस 2 प्लेस को शिफ्ट करना 2. अगर 3 होता तो 7 बन जाता वो. So now this. So this is all about multiplying decimals by tens, hundreds and thousands. Now let us see what happens if you multiply multiplication of decimals with whole numbers. So this subheading, supposing I take 6.03 into 7. ओके, आई विल टीच यू द ईजी. आपको मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा. तो इसको आप क्या करो, फॉरगेट अबाउट डेसिमल प्लेस. सो व्हाट यू डू, इसको ऐसा लिखो, क्या 603 into 7. ये डेसिमल प्लेस को भूल जाओ एंड स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई एज इट इज. 7 3s are 21, 2 700 plus 2 is 2, 6 7s are 42. तो इधर कितना डेसिमल प्लेसेस है? 1 2. आफ्टर दैट काउंट करो 2 डेसिमल प्लेसेस. सो फ्रॉम हियर 2 डेसिमल प्लेसेस. So that equals to what? This is equals to what?
42.21 is the answer. So आपको what you have to do when you have to multiply 6.03 with 7, just ignore this decimal, straight away write 603. Don't worry about the decimal point and multiply as it is. So you get 4221. Once you get 4221, count the number of decimal places from right to left, that is 1, 2, and after 2 digits you have a decimal place. So like 1, 2, count the digits and put a decimal places. See, here you have 2 decimal places, here also 2 decimal. Therefore the answer is 42.21. Simple, समझ में आ गया? ये बहुत सबसे आसान तरीका है. So I'll take one more example. This is example 1. Example 2, that is 0.816 into 6. Done? So forget about this decimal places. Straight away what you do? 816 into 7 से multiply करो. Sorry, 6 से multiply करो. So forget about this decimal place. Just multiply. 6 is the 36. 3 6 1 is 6. 6 plus 3 is 9. 6 8 are 48. So how many decimal places? After this point, there are 3 decimal places. So count 1, 2, 3. That is equals to 4.896. 4.896. So answer is what? 4.896 is the answer. Cross check it. 6 is the 36. 6 carry 3. 6 is the 6 plus 3 is 9. 6 8 is 48. 48 आ गया. So we have done it 48. How many decimal places? 3 decimal places. From the thing you count. Don't count from here, you will go wrong. Always count from left to right. So don't take this because this will be misleading you. So इधर से start करो. Always decimal should be left from right to left. So 3 decimal places, 1, 2, 3, and you will put a decimal place. So answer is 4.896. Answer is 4.896. समझ में आया? और करेंगे. Third problem. This is 12.053 into 9. So what I'll do? I'll straight away take 12.053 into 9. Right? 9 3s are 27. 2 will come here. 9 5s are 45. 45, 46, 47. 7 plus 4. 9 zeros are 0 plus 4. That is 4. 12 9s are 108. 108. 108. So how many places? 1, 2, 3. Count. 1, 2, 3. Count. So this is equals to how much? 108.477. If you have to round it to 2 decimal places, what I told you, he'll say round it off to second decimal places. What I'll do, I'll catch hold of the last digit. So this is, if it is greater than or equals to 5, what I'll do, I have to remove 1 from this and that add plus 1 to this. Okay, so forget about that. Once you remove, that is of no value for you. And this becomes what? 108. When you have added to 7 plus 1 is 8. That is 4. That is 108.48. Don't read it as 108.48. Don't read like that. आपको क्या पढ़ना है? 108.48. जितना भी वैल्यू डिजिट के बाद आएगा उसको इंडिविजुअल से गिनती करना है. सो ऐसा मत कहना 108.48, ये गलत होगा, गलत जवाब होगा. 108.48 ये आसान तरीका है और सही तरीका है. तो हैव यू फॉलोड? यस. विल टेक सम मोर केसेस.
fourth one, that is 1.9060 into 7. अब क्या करोगे? 9060 है into 7. So we know that 90600 has no value. This is equals to what? 1.906 into 7. Don't count this as a decimal, please. Okay, take this, that is equals to 1.906 into 7 equals to what? So 1906 into 7. 6 sevens are 42. 0 is there, straight away you can write 42. जब भी इसके पास 0 आएगा तो 6 sevens are 42 डायरेक्ट लिख दो. Then 9 sevens are 63. 3 and 6. 7 is 7 plus 3. 7 plus 3 is 13. So how many places? 3 places. Here you would have taken 4 places. That is wrong because you know 0 has no value. So 3 places. This becomes 13.342. This is your answer. And fifth problem, that is 14.0909 into 9. Okay, so what I'll do, 14 I'll remove that. 14.0909 into 9. See, 9 nines are 81. So since 0 is there, don't worry, 9 nines are straight away right 81. See, 9 nines are 81. 1 that will be 8, isn't it? And 0 plus 8 is 81. So whenever you have 0 along with this, straight away 9 nines are 81, write 81 because of this 0, 81 straight away. Now 9 nines are 81, again 81. 9 nines are 81, again write 81. 4 nines are 36, 3. 9 nines are 9 plus 3, 12. How many places? 4 places. 1, 2, 3, 4 places. From here you have to count 4 places and put the decimal point, that is 126.8181. This is your answer. So multiplication is very easy. आपको बहुत आसान से करना है, बहुत मुश्किल तो नहीं, आसान है. इतना ही आपको डेसिमल प्लेस को कहाँ पे डालना है वो सीखना है. इतना सीख जाओगे तो बहुत कुछ करोगे. पूरा प्रॉब्लम मैथमेटिक्स ब्रैकेट्स में लिखा था, ब्रैकेट्स फ्रैक्शंस और डेसिमल में निर्भर करता है. अगर इसको सीख जाओगे सही तरीके से तो आधा काम पार हो गया, क्योंकि यही आपको दिक्कत देती है जब हिसाब करते हो. डेसिमल में गलती कर दिया, हो गया, तो प्रॉब्लम फिनिश. कुछ भी नहीं करोगे, 0 मिलेगा. सो बच्चों, मैंने 3 प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है, तो शायद और एक ले लो. फोर्थ वन 9.999 इंटू 9. मेरा 9 फेवरेट है इसलिए इसको नहीं छोड़ूंगा, अभी मत छोड़िए. ओके, तो पहला प्रॉब्लम. So multiplication decimal by a whole number. So these are whole numbers, these are decimals, isn't it? I told you decimals and whole numbers. So these are whole numbers on the right hand side and these are decimals on the left hand side. So first problem, 5.82 into 12. So what I'll do, I'll ignore this, I straight away write 582 into 12, right? So 2 2s are 4.
2 8s are 16, carry of 1. 2 5s are 10, 11 plus 1. 2 2s are 4, 2 8s are 16, carry of 1. 2 5s are 10 plus 1 is 11, and this is 2, 8 and 5. So what happens? 4, 8, 9, 6. So how many places? 2 places. So 2 places. From here you count the number of places are 2. So from right to left, count right to left, 2 places, put a decimal point. So this is equals to what? 69.84. Okay. So मिटा देंगे. The next problem. Second problem. 0.678 into 14. So what I'll do? 678 into 14. 4 8s are 32, 2, carry of 3, 4 7 28. 28 plus 6 31, 1, carry of 3. 4 6 are 24. 24 plus 6 27. 27, and this is 8, 7 and 6. Here one means just repeat it after leaving one place. That's all, very simple. So you need another thing. So this is 2, 9, 14 and this is 9. So how many places? 1, 2, 3. So count 1, 2, 3 on left it is. So what is the answer? Answer is 9.492. 492. Okay, बहुत आसान है. Third problem, that is 0. So 0.0275. So what I'll do? I'll take this as 275 into 17 into 17. See, though we have 1, 2, 3, 4, because this is divided by 10,000. So don't. I'll take this, but while putting the zeros, I have to take 4 places. But to multiplication, I have taken only 3 places. So that is 7 5s are 35, 3 7 7s are 14 and 14 plus 6 52. 5 7 2s are 14, 14 plus 5 19, and this is 5 7 2. This is 5 7 6, carry of 1 4. So how many places? 1 2 3 4, isn't it? So 4 places from here. I put 1 and 0. So this becomes what? 0.4675 and this one. समझ में आया? मल्टीप्लाई करो. अगर जो भी इधर 0 है भूल जाओ, उसको मल्टीप्लाई करो. लास्ट के अंदर जब अगर डेसिमल के पास, when you are putting this, you have to take this 0 also into account, because this is, what is this? 275 divided by 4 values, that is 4 zeros, isn't it? So 1 0, 1 point, 1 0, another point, another 0, another point, another 0, that is 0.0275. Got it? I have this last problem. I'll take 9. So 9 into 9. 9 9s are 81. 8 into, that is, 9 9s are 81. 81 plus 8 is 89. 9 and 8. 9 9s are 81 plus 8. 81 plus 9 is 89. Again 9, 8. 9 9s are 81 plus 8, 89. How many zeros? How many places? 3 decimal places.
1, 2, 3. This is, so this becomes what? 89.991. This is your answer. So dear students, now we have learnt multiplication by tens, hundreds, thousands. Then later on we have learnt multiplication decimals by a whole number. Now we learn multiplication of decimal by a decimal. Done? तो बच्चों इसको मिटा दूंगा. भैया multiplication of decimal by another decimal, I write another decimal by another decimal. Now we'll take the small examples. I'll take 0.32 into 0.6. Simple example. Okay. Now what I'll do, as usual, I'll multiply this by, that is 32 into 6. 6 2s are 12. 6 3s are 18. 6 2s are 12 plus 1. 6 3s are 18 plus 1, 92. So here we have 2, that is totally how many places here? 1. So 1 decimal place here and 2 decimal, add this, totally we will have 3 decimal places. So 1, 2, 3. So this becomes what? Totally 0.192. What you have to do? You have here 2 decimals, a point, and here 1 decimal. That is decimal places are 2 and decimal place is 1. So you as usual multiply this and later on count the number of decimal places. Here 2, that is 0.32 means 2 places and 1, totally 3 places. So you put a point after 3 places. Very simple, है ना? बहुत आसान है ना? पढ़ाने का तरीका चाहिए. अगर पढ़ाने का तरीका ठीक हो गया तो आसान से पढ़ लोगे, सीख लोगे. Second problem, that is 2.16 into 3.12. So here we have totally 2 places plus 2 places, 4 decimal places. So we will multiply this 216 into 312. Right? We will multiply 2 6s are 12, carry 1. 2 1s are 2 plus 1, 3. 2 2s are 4. This is 216. This is 3 6s are 18. 3 1s are 3 plus 1, 4. 3 2s are 6. Each place you have to leave one place. See, first 2 2s are 12, 3 1 2 1s are 2 plus 1 is 3, 2 2s are 4. Next you have to leave one place and start again. 1 6s are 6, 1 1s are 1, 1 2s are 2. Next 3 6s are 18, one place again you leave, 18, carry of 1. 3 1s are 3 plus 1 is 4, 4. And then 3 2s are 6. Got it? Always leave one place and do it, it will be easy. This add it now. That is 2, 3 plus 6, 9. So 9 plus 4, 13, carry of 1. 3 plus 4 is 7. And this is 6. Totally how many? Here 2 places plus 2 decimal places. That is 2.16, 3.22. Totally you have 4 decimal places. So count 4. 1, this is 1, 2, 3, 4, put a point. So this becomes what? 6.7392. Done. I love this. So now if you are asked to set it to 2 decimal places, I will teach you how to do it. This is approximately equals to or equals to or tends to. This is 6 point. See here it is not equals to, see the last digit, if it is greater than or equals to 5, you have to 1 add to this. But
But since this is 2, which is less than 5, ignore this 2. And next digit, this is greater than and less or equals to 5, so it is 9, which is more than 5. I'll remove 1 from this and add 1 plus 1 here. So what happens is this becomes 6.74. Got it? So 2, it is less than 5, remove that. So next catch hold of next digit number, that is 9. 9 is greater than 5. So out of that you remove 1 and put it to the next digit. So plus 1 to 3, that is 3 plus 1 is 4, then 7, 6. So therefore 2.16 into 3.12 equals to this. Okay, add up this. Problem number 3. 2.164 into 3.12. So what I'll do, only for a hint, here 3 places plus 2, 5 places, 5 decimal places we need, but forget it, just multiply this. This is 2164 into 312. Multiply this. 2 4s are 8, 2 6s are 12, carry of 1, 2 1s are 2 plus 1 3, 2 2s are 4. This becomes 4, 6, 1 and 2. 3 4s are 12, carry of 1. 3 6 are 18 plus 1 19, carry of 1. 3 1s are 3 plus 1 is 4. 3 2s are 6, add it. 8, 6, 11. 2 plus 8 plus 3 is 11, carry of 1. So 10 plus 15, carry of 1. This is 2 plus 4 plus 1, 7, 6. So totally how many here? We have 3 decimal place and 2. 3 plus 2 is 5. 1, this is 8. So 3 plus 3 decimal place here and 2 decimal places here. So totally 5. So 5, 1, 2, 3, 4, 5. So this becomes, you put the point here, 6.7516.8. So you can straight away add, this is equals to what if you multiply? 6.75168. So in the event if he asks you to set it to 2 decimal places, then only do, otherwise leave as it is. Okay, because 5 places I have got. So this is how you have to multiply and fix the decimal point. Fixing of the decimal point है ना, बहुत आसान है और बहुत केयरफुली करना है आपको. अगर थोड़ा सा लापरवाही बटे, कुछ किया आपने लापरवाही से, प्रॉब्लम चला जाएगा. आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, अंडा, मुर्गी का अंडा. So you get 0. So be careful. Fourth one, 0.1234 into 0.4321. So totally 4 plus 4, 8 places. So we multiply. That is 1, 2, 3, 4 into 4, 3, 2, 1. So 1, 2, 3, 4, because 1 4s are 4, 1 3s are 3, same thing. This is double, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2. Triple, 3 4s are 12, 3 3s are 9 plus 1 10, carry of 1, 3 2s are 6 plus 1 7, 3 1s are 3. Now 4 times, 4 4s are 16, carry of 1. 4 3s are 12 plus 1 13, carry of 1. 4 2s are 8 plus 1 9, 4 1s are 4. Add it. This is 4, 8 plus 3 is 11, carry of 1. 2 plus 2 4, 4 plus 6 is 10, 10 plus 1 is 11, plus 1,
4 plus 6 is 10, 10 plus 2 is 12, carry F1. 7 plus 3 is 10, 10 plus 3 is 13, carry F1. 1 plus 9 is 10, 10 plus 3 is 13 plus 1 and 5. So how many places? 4 plus 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We want 8 place. We don't have 8 place. What will you do? यहाँ पे क्या है? 4 और 4, 8 प्लेस. मगर यहाँ पर 8 नहीं है. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 प्लेस क्या कर रहे? उसके टाइम में इधर एक 0 डालो पॉइंट. तो कितना प्लेस हो गया? गिनो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the answer is 0.05332114. This is your answer. आसानी ना स्टूडेंट्स? यहाँ कुछ भी नहीं, आपका मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए ठीक से. अगर मल्टीप्लिकेशन गलती कर दिया तो प्रॉब्लम चला गया. क्योंकि फिक्सिंग डेसिमल ने बहुत आसान तरीके से सिखाया हूँ. बहुत आसानी से लिख सकते हो. डेसिमल प्लेस काउंट करो, डाल दो. अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन गलती कर दिया तो प्रॉब्लम गलती हो गई. कुछ भी नहीं कर सकते. सो बी केयरफुल व्हाइल मल्टीप्लाइंग. मल्टीप्लाइंग बहुत करना और मल्टीप्लिकेशन पर एडिशन, ये दोनों चीज़ बहुत केयरफुली हैंडल करना है आपको. एंड लास्ट प्रॉब्लम, वन मोर प्रॉब्लम, फिफ्थ वन. 0.165 into 31.23. So 165 into 31.25. 5 5s are 25. 5 carry of 2. 5 6 are 30. 32. 2 carry of 3. 5 1s are 5. 8. So this is 2 5s are 10, 230. So that is 2 5s are 10 carry of 1, 2 6s are 12 plus 13 carry of 1, 2 1s are 2 plus 2 1s are 2, कभी कभी 165. So 165 लिखो. 165 into 31.23. 3 5s are 15, carry of 1. 3 6s are 18 plus 1 19, carry of 1. 3 1s are 3, 4 495. 2 5s are 10. 2 5s are 10, carry of 1. 2 6 are 12 plus 1 13, carry of 1. 2 1s are 2 plus 1 3, 330. And 165 if multiplication. So 3 again I rub this. 3 5s are 15, 3 6s are 18 plus 1 19, 3 1s are 3 plus 4, add it 5 9. So this is 5 plus 3 8, 8 plus 2 4 is 12, carry of 1. So this is 1 plus 3 4, 4 plus 6 is 10, 10 plus 8 15, carry of 1. 10 plus 1 11, 1 5. So how many places? 3 and 2, 5 places. 1 2 3 4 5. Fifth place you have to put a point. So this is equals to what? 5.15295. This is your answer to last topic of decimals, division of decimals. So आपको एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया और ये डिवीजन. डिवीजन भी बहुत आसान है तो करेंगे. We'll first start with division by 10, 100 and 1000. We have already done it, but एक 3-4 फॉर्म करेंगे क्योंकि एक प्रोसीजर होने दो. उसके बाद डिवीजन बाय ए होल नंबर एंड लेटर ऑन
division of decimal by a decimal, ऐसा करेंगे, that finishes decimals. So now division of decimals by 10, 100, 1000, etc. We will take a small example, that is 2.1. So now if I divide this 2.1 by 10, what happens here? I told you, you have to shift the decimal place to the left. In multiplication, shifting towards right, but in case of division, you have to shift it to left. So what happens to this? This becomes 0.21. So 2.1 becomes 0.21. When you do problem number 2, 2.1, if you divide this by 100, that is 2.1 by 100, because I want to show you the same values with different things so that you will understand it better. So this what happens to this. So you have to 1 0, you will shift one place. So another 0, you have to shift one more place. So what I will do, this becomes 0.021. So 100 places means you have to shift 2 places, that becomes 0.21. And third place is 2.1, that is equals to 2.1 by 1000. So here for 10, 1 point, for 100, 1 0, for 1000 there will be 0.0021. This is your answer, and so on and so on. So the number of zeros you have to shift towards left. Very simple, very easy to understand. So division of decimals by tens, 100, 1000 or 1000, 10,000, etc. So the procedure is same. So I have taught you in the beginning, but anyway, think it is a revision for you. Okay, love this? हाँ सर, रिप कर दो, इतना अच्छा सिखा रहे हैं. So now the division of decimals by a whole number. So whole number is, I'll put a dot, problem, that is 0.42 divided by 7. Okay, this can be written like this also, that is 0.42 divide, or it can be written like this, 0.42 by 7. ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो. तो आपको क्या करना है, इसी को भी इसी तरह करेंगे. क्या करेंगे? विल फॉरगेट द डेसिमल प्लेस, भूल जाएंगे. भूल गया सब कुछ, याद नहीं है सब कुछ, तो ऐसा करेंगे. सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट 42 divided by 7. Okay, 6, 7 goes 6 times, that is 42. So remainder is 0. So what it says, 42 divided, answer is 6. So 2 decimal places. So what happens to this? This becomes 0.06. So multiply karo, 0.06 into cross check. 6 sevens are 42. So is there 0 plus 4 is 4. Okay. So forget the decimal place, straight away divide it, and later on 2 places इसको ऐड करो, 0.06. Done.
समझ में नहीं आया? सो दिस दैट इज 7, 42 से करो तो आंसर 6 7 जा 42, 0 0. तो व्हाट इज आंसर? दैट इज 0.42 divided by 6. What we got? We got 6, isn't it? Because I have taken this place, shifted this place to 2 places. What I'll do, again I'll shift it back. That is 1 place, 2 place. So that becomes 0.6. So that becomes what? 0.42 by 7 equals to 0.06. This is the answer. समझ में आ गया? प्रॉब्लम नंबर सीख लो. Okay, I'll rub this. Problem number 2. Divided by 6. I'll take 48. I'll divide this by 6. 6 8s are 48. That is answer is 0, isn't it? So how much you got? 8.0, isn't it? But you have 2 decimal places, isn't it? So I have to shift it to 2 decimal places. That becomes what? 0.08. So that is, we got answer is 8. So 2 decimal place. If I divide this by 10, you'll get 0.1, isn't it? So if I divide by 100, it becomes 0.08. So 0.08. So 2 decimal place, 2 decimal place. समझ में आ रहा है? Okay, that is 0.08. So cross check. 0.08 into 6. 6 8s are 48. 8 carry 4. 6 0s are 0 plus 4. And point, that is 0. आ गया वापस? बहुत आसान है, आसान से सिखा रहे हैं हम आपको. Third problem. One 44 divided by 12. What happens here? I'll take 12, 144. I'll make it as 144. I'll make it a round figure. So 12 12s are 144. That is 0 0. Answer is 12.0. So after 2 places, isn't it? What I'll do? I'll shift this. Answer is 12.0, isn't it? 12.0. Answer is 12.0. So what I'll do? He wants 2 decimal places to the left. We have to shift this point to the 2 decimal places. Then what happens with this? 0.12. Cross check. 12 into 0.12. 2 2s are, that is 24. 1 2s are 2. 1 1s are 1. 4 4 1. 2 places, 1.44. ठीक है? So 3 problems. जीरो 0.76 डिवाइडेड बाई 2. बड़ी आसान है, बहुत आसान का प्रॉब्लम दे दिया मैंने आपको. सो व्हाट आई डू,
I take straight away 76 and I divide this by 2. 2 3s are 6, एक आया, then take this 6, 2 8s are 16, 0 0. So answer is 38.0, isn't it? So how many decimal places? 2 decimal places. So the answer is what? You have got 38, isn't it? You have to shift 38 point, you have to shift 2 decimal places. So this becomes 0.38. Cross check. 0.38 into 2. 2 8s are 16, 2 3s are 6, plus 1 7. 0.76 divided by 2 is 0.76. So answer is 0.38. Fifth problem. Zero point 818. I write 0.816 divided by 4. So 816 divided by 4. So 4 2s are 8 0. So bring down this 1 1. It doesn't go. I'll write it 0 and bring this 6 also. So now 4 4s are 16. So answer is 0 0. So multiply and see. 204 into 4 is 4 4s are 16. 4 2s are 8. 8 16. Correct? That's correct. So how many decimal places? So it is 204.0 the answer. For this, what to say? 204 you have got 1 2 3. So 3 decimal place. Write on 0. That is 0.204 is the answer. So we have understood division of decimals by a whole number. Now last part of this is division of decimal by another decimal. So dear students, I have selected some problems from textbook and will follow second method for this. Whatever I taught you the first method and the second method, which is based upon textbook only. So let us try this. So whichever you feel convenient, whichever you feel comfortable, you can adopt that method. So whatever I thought was an easy method, but this is a little bit cumbersome and tedious. आपको छोड़ दूंगा, आपको जो method चाहिए वो methods में आप solve करो, हल करो और marks score करो. So एक पहला problem लेंगे. So what we'll take 93.45. This is second method. Second method. So you have to divide this by 15. 93.45 divided by 15. So what happens here? I'll divide this 15 into कितने बार जाएगा? 15 6 times. तो क्या हो गया? 15 6s are 90. 3 आ गया. तो 3 आने पर you cannot again divide this. So what I'll do? I'll bring this 4 down. So because I have a decimal place here, I'll put a decimal place here. So I bring this 4 here. Okay. तो कितने बार जाएगा? 15 2s are 34 आ गया. अब since you already in a decimal place, no need to add one more decimal place because एक equation के अंदर एक decimal के एक ही point decimal रहेगा, दो नहीं रहेगा. So you bring this 5 straight away here. Okay. So 15 goes 3 times. That is 45. The remainder is 0. So what will be the answer of this? Answer will be 6.23 is your answer. So whichever method you want, you can adopt. So you can shift the decimal and finally make whole number and divide it, or you can divide whatever method you want. जो method आपको
आसान लगेगा, उसी मेथड को फॉलो करो। मैं 2 मेथड भी बता दूंगा आपको, 2 मेथड में से कौन सा प्रॉब्लम चाहिए, कौन सा मेथड चाहिए, आप डिसाइड करो। सो आई विल रब दिस, विल गो फॉर सेकेंड प्रॉब्लम। This is, he wants 8.28, you have to divide this 8.28 by 12, 8.28 by 8.28, sorry, 8.28 by 12. So since 8 cannot be divided by 12, so I will put a 0 and bring this 0 here. So finally 8 aa gaya. So then what I will do, I will put a decimal point and bring this 2 down, so this becomes 82. Now 12 sevens are 12 sixes are 72. So 12 sevens are 84, 12 sixes are 72. So you get 10. Now since already I have taken in decimal place, no need to bring this. So bring this 8 down. So it becomes 18. So 12 goes 9 times. 9 into 12 is 108. So 0, 0, 0. So the answer is 0.69. आसान है ना ये भी? सोचो कौन सा आपको आसान लगेगा, इन विच यूर मेथड यू आर कंफर्टेबल, अडॉप्ट दैट मेथड. ओके, बट आई वांट द राइट आंसर. नेक्स्ट 0.6204, you have to divide this by 5. So now it is not possible to divide 0 by 5. तो क्या करेंगे, एक 0 डालेंगे, then it becomes 0. Then I will bring this 6 here. So point is there, I put that decimal point. 5 goes there 1 time, 5 times, that is 1. Then next I will bring this 2, I will add there. So 5, since the decimal here, so no problem, straight away can. So 12, this goes 2 times. 5 into 2 is 10. So 2. So bring this 0 now. So this becomes 20. So 20 goes 4 times. 4. 20. That is 0, 0. Now next bring this 4. Okay. 4 cannot be divided by 5. I will put on 0 here. So you cannot divide this, so I will put on 0 here, and this 4 I will put it here. So I will bring this 4 and put it here, and since you cannot put on 0 and here, so this goes 8 times. So 5 8s are 40, 0, 0. So what happens, the answer is 0.12408. Answer is this. So once again I will explain to you. So 0.6204 divided by 5. Done? So you cannot divide 0 by 5. So I put a 0 here and put on dot. Now I will bring this 6 down. So 0 here. So 0. So this 6 will come here. Done? It goes 1 time. So this becomes 5. So 1. So now I bring this 2. So this 2. So what happens? It goes 2 times. That is 10. So 2. So now what I will do? I will bring this 0. Done? So it becomes 4 times it is divisible. 5 4s are 20. The answer is 0, 0. I will bring this finally, this 4. I will put it here. So 4 cannot be divided by 5. So what I will do? I will put on 0 and bring 1 0 for this. So it goes how many times? 5 8s are
40. So you have to divide, आपको डिवाइड करना पड़ेगा जब तक आपको 0 नहीं मिलेगा. तो आंसर क्या हुआ? आंसर इज 0.12408. So we'll go for the next problem. समझ में आ गया? Problem that is 0.296 divided by 8. Okay, now you cannot divide 8 by 0. I'll put a 0 here and I'll put a decimal point. So this is 0. I'll bring down this 2. So again 2 cannot be divided by 8. So what I'll do, I'll put on 0. I'll bring this 9. 8 3s are 24. So 5. Now I'll bring this down, this 6. 8 7s are 56. 0 0. So answer is 0.037. समझ में आ रहा है? सो जो भी मेथड आपको पसंद है, आसान लगेगा, कंफर्टेबल हो, उस मेथड को फॉलो करो. चाहे मेरा मेथड फॉलो करो या ये मेथड फॉलो करो. आपके लिए दो ये है, मगर आपको द्विधा में फंसा दिया हूँ. जो भी चाहिए चुन लो. दो भी आसान है, मतलब गलत तो नहीं, मुश्किल तो नहीं. डिवीजन सीख लो, कोशिश करो, बार बार आ जाएगा. ये बहुत सिंपल है. सी 8, you cannot divide 8 0 by 8, put on 0 and so you bring that 0, so 0 आ गया. तो what you do, पॉइंट है डेसिमल पॉइंट डाल दो. उसके बाद 2 को लेके आओ. अगेन दिस विल नॉट बी डिवाइडेड, डिविजिबल बाई 8. So what I do, I have to bring down next point, so I'll add on 0 and bring down this 9. So how many times? Now it is 29 can be divided by 8. So 3 times. 3 8s are 24. 29 minus 24 is 5. Now bring down the 6. 7 times. Very simple. ये भी आसान है. सो हमारा मेथड ट्राई करेंगे इधर इस प्रॉब्लम को. सो हमारा मेथड क्या है? 296 divided by 8. This problem I am doing it by my method. So 8 3s are 24. 5 मिल गया. So bring down this 6, इसको ऐड करो. So 8 7s are 56. 0 0. So what you are asked here? 0.296 divided by 8, isn't it? What you have got? You have got 37. I have not taken this, forget the decimal place. So he wants 3 decimal places. So here we have 1 2 3. So I'll put on 0 and I'll put this. So this becomes what? 0.037. So this is equals to 0.037 because 3 decimal places. Which method is easy for you? Definitely sir, आपका मेथड बहुत आसान है. उसमें तो मुश्किल पड़ेगी, मरियम बहुत आसान है ना? तो इस मेथड को फॉलो करो, बहुत सिंपल है एग्जामिनेशन के लिए. चाहे ये मेथड करो या वो मेथड करो, मार्क्स उतना ही मिलेगा. Last problem, 48.38 divided by 8. So 8 6s are 48. 0 0. Now you have a point, you bring that 3, you bring that 3 here, so not possible.
So what you'll do, you'll put on 0 and you'll bring this also 8 here. 8 4s are 32. 32, 6, 0, 8 9s are, 8 8s are 64, 8 7s are 56, 4 0, 8 5s are 40, 0 0. So answer is क्या? 6.0475. So this is the way you have to do. So बच्चों डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय होल नंबर हो गया. अब डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय डेसिमल्स करेंगे. सेम मेथड, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, उतना ही कुछ नहीं है. सो व्हाट विल डू, इसको हटा देंगे. Division decimal by another decimal. So problem number 1, 0.32 divided by 0.4. So that is 0.32 by 0.4. So easiest method is, there are two ways to do this, that is divide and multiply both denominator. इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 10 कैंसिल होगा तो वही वैल्यू रहेगा ना. तो ये क्या हो गया, दिस बिकम्स व्हाट, 3.2 by 4, which is nothing but 0.8 times, है ना. One method, this is first method. Second method, so what I do, 0.32 by 0.4. What I'll do, I'll shift one decimal point here and I'll shift one decimal point here. So what happens to this? This becomes 3.2 by 4, nothing but 0.8. So the answer is 0.8. Okay, make a note of this. Second problem, 16.4 divided by 0.4. So what I'll do for this, 16.4 by 0.4, easiest method, what I'll do, I'll shift this and I'll shift this. So this becomes what, 164 by 4. So what happens, 4 4s are 16, 4 1s are 4. So this becomes what, 41. This becomes 41.
easiest method. 14.4 divided by 1.2. So this, what I'll do, next problem, 14.4 divided by 1.2. So इसको मैं एक शिफ्ट करूँगा, इसको एक शिफ्ट करूँगा, तो ये क्या हो गया, दिस बिकम्स 144 by 12. So 12 ones are 12, 12s are, so this becomes 12. Fourth one, so we'll take this problem, that is 0.0024 divided by 0.04. So this can be written as what? 0.0024 by 0.04. What I'll do, I'll shift this to 2 decimal places, and I'll shift this to 2 decimal places. What happens to this? 0.24 by 4. This becomes what? 6 times, that is 0.06 times. So if you multiply this, you'll get this. So another method is 0.24 divided by 4. You don't get this, so 0, 2. So again this is not possible. So you put 0 and bring this 4. Or this becomes 6 to the 24, 0, 0. So answer is right. So for this answer is 0.06. I rub this. समझ में आया? तो दोबारा करके दिखाता हूँ. लिख लो 0.24 डिवाइडेड बाई 4. मैंने इसको 2 शिफ्ट किया, ये 2, ये तो ये हो गया 0.24 by 4. सो 4 0 नहीं जाएगा तो 0 डाल दो, पॉइंट, ये पॉइंट को इधर डाल दो, दिस पॉइंट. सो 0 आ गया. सो ब्रिंग दिस 2 एंड दिस बिकम्स 2. तो ये नहीं जाएगा 2 भी, तो एक 0 डाल दो, तो ये 4 भी लेके आओ. तो 4 6 24. So 0 0. So therefore the answer is 0.06. मिटा दूं आंसर. So we'll do this. 1391 divided by 1.3. So क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, इसको. So what I'll do, I'll write next time 1.3, that is 1391 divided by 1.3. So I'll divide and multiply by 10. What happens here? 13910 by 13. Correct? I have shifted, or the method is otherwise, or this is 1391 by 1.3. So I will shift this. Already we have 1 0. So what you do, you add 1 0 here and shift this point. So this is same, both are same, 13 by 13. So now 13910 divided by
13 ones are 13, 0 0, you bring this 9, so नहीं जाएगा तो एक 0 डालो, तो ये भी एक लेके आ जाओ, 7 times, so 7 times 91, 0 0, so ये 0 आ गया, तो इसको एक 0 डालिएगा, so that becomes what? 1070. The answer is 1070. समझ में आया? लो और एक बार समझाता हूँ. So this is 1391 by 1.3. So इसको क्या करूँगा? I'll shift this and I'll add on 0. So now this becomes what? This becomes 13910 by 13. Now you can divide this. 13910. 13 goes one time, so 13. Answer is 0 0. So you bring this 9. So 9 cannot be divided with 13. So put on 0 and bring this as 1. Bring this as 91. So 91 goes there. 13 into 7 is 91. So answer is 0 0. So bring down this 0 here and put this 0 here. So answer is 1070. समझ में आ गया? And lastly, 28 divided by 0.56. So what I'll do? 28 divided by 0.56. I'll shift 2 places and add 2 zeros. Can I? हाँ sir, क्यों नहीं? So this becomes what? 2800. 2800 by 56. So divide करो. 2800 divided by 56. कितने बार जाएगा? 5 280. 0 0 0. Bring this. So this becomes 0. So answer is 50. बच्चों, मैंने आपको डेसिमल, आपका डेसिमल कंप्लीट किया हूँ. अब बैठकर ध्यान से पढ़िए. दोबारा एक बार, 2 बार, 3 बार कीजिए. ध्यान से कीजिए. बहुत आसान है सब्जेक्ट, मुश्किल तो नहीं. थोड़ा सा दिमाग खाएगा मगर नो प्रॉब्लम. स्टार्टिंग में होगा. शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल प्लेसेस को सीखना है आपको. डेसिमल प्लेस जब आगे जाता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड क्या होता है सीख लो. मैंने बहुत अच्छी तरह से सिखाया हूँ. आसान है, मुश्किल तो नहीं. आसानी से पढ़ो और ध्यान से सीखो. बहुत आसान है. अगर आप, दोबारा कहता हूँ, तीसरी बार कहता हूँ, अगर आप लोग ब्रैकेट्स, यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स पढ़ लोगे, ठीक से जान लो, तो आप मैथमेटिक्स में बहुत क्या बोलते हैं, यू विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग. यू कैन डेफिनेटली, दैट इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स. बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियाँ यहीं पे करते हैं. ब्रैकेट्स इस्तेमाल करना नहीं जानते, फ्रैक्शंस को इस्तेमाल करना नहीं जानते, या फैक्टराइजेशन नहीं जानते, एलसीएम नहीं जानते. मैंने हर कुछ सब भी कवर किया हूँ एंड डेसिमल्स में भी कवर किया हूँ. सो सबसे ज़्यादा फ्रैक्शंस और डेसिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसे सीख लो, ये करो. सो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे. सो नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू टेक नेचुरल नंबर्स, दैट इज नंबर सिस्टम्स. सो नंबर सिस्टम्स के अंदर इंटीजर, होल नंबर, देन natural numbers पढ़ेंगे. We'll, in the next class we'll study natural numbers. So it will help you a lot in teachers, whole numbers, number systems. That is, in the next class we'll learn number systems. That is one thing. So before I end, please see that all my videos reaches you wherever you are.
and whatever you are doing, in whichever part of world you are, you will get it. So only thing, if you want me to link up with you, अगर आप लोग को मुझे ढूंढना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ और वहाँ पे ऑल रहता है, ऑल को क्लिक करो। मतलब जो भी मैं वीडियो डालूंगा वह सारे वीडियो आपके लिए जहाँ भी रहो आपको पहुँच जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मेरे क्लास को पसंद करते हो तो। बगैर सब्सक्रिप्शन के बेल बटन दबाए ऑल को क्लिक किए आपको मेरे वीडियोस नहीं मिलेगा। सो आपकी इट्स योर वे, इट्स योर विश। अगर आपको मेरा पसंद आया क्लासेस तो करो, वरना आपकी मर्जी। ओके देन आई स्टॉप एट दिस। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास। सो आई वांट टू सी हाउ यू रेस्पॉन्ड टू माई दिस वीडियो। आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन अ सिंपल वे। बहुत आसान से मैंने कवर किया हूँ आपके लिए। आप अच्छी तरह पढ़ सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हो, मेरे टीचिंग को पसंद कर रहे हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाओ एंड क्लिक ऑल, उसको करो। सो ऑल द वीडियोस विल रीच यू विदाउट एनी डिले। इमीडिएटली द मोमेंट आई पोस्ट हियर यू विल गेट इट द नोटिफिकेशन। सो आज हो तो सके तो मैं ये वीडियो आज डालूंगा या कल डालूंगा। So, God bless you, take care, all the best. Good night, dear students.